Hi, how you doing? I'm shocked. I'm surprised. तुम टाइम पे कैसे हो आज? I know, surprising, right? नहीं तो मुझे Well, अकेले आके हाँ हेलो करना पड़ता है. I finished everything on time today. मैंने पढ़ाई भी की, मैंने room भी साफ किया, मैंने shopping भी की, did everything on time. So, and I watched the Wow. Queen's funeral as well. Okay, I gave that a miss क्योंकि I was reading. I read. I did a little bit of editing. खाती रही पूरा दिन. Yeah, I had dinner as well. Yeah, I didn't have so no all dinner. done. I had like from breakfast, lunch जो भी है मैं बस खाती रही. आज मैं बस पढ़ी हूँ, like book reading and eating. That's all I did. Yeah, same. Even now, I'm having chocolate, dairy milk. Don't put chocolate in my face. I have a bag of chocolate here. Okay, let's That's say hi. why. Yeah, let's hi to everyone. Hey, Hi, Ganesh. Ganesh. How are you? Heart, heart, hearts. Back to you, Siraj. This is false. One heart equals Yes, one that's heart. not happening, False. Siraj. Siraj, stop Because of lying you, to people people. don't send super chats Yes. and people कंजूस don't हो send us तो दूसरे को money. कंजूस मत बनाओ ना. उसको लगता है हम बहुत अमीर है यहाँ पे बैठे हुए हैं. That's not how it is, Siraj. Come on. ओडी यहाँ पे तो लाइक के लिए कह रहा है लाइव पे कब आएगा. Exactly. Wow. मैंने भी like का बोला, but I'm here. Oh yeah, Harris, you did your bit. Shaza, hey. Let's see. Oh yes, House of the Dragon review. आज अभी तक record किया Episode नहीं है. 5. शाम को record करेंगे. मेरे कल सुबह upload होगा, so you have to wait. लेकिन अगर आपने House of the Dragon episode देखा है, then you know the significance of green. Do you know the significance of green, Harris? I have not seen House of Dragon. I told you, I only watch your review. That's where I get all the information. Yeah, well, the green means something. That's why I'm wearing green. Oh, okay. You Oh, should yeah, have worn yeah, this in the review then. we're still waiting. Oh, Shaza loves the review. Tino and I do. Yay! It's great, yeah. Yes, the episode was very, very crazy. Very, very crazy. Hi, Indu. How was your camping trip? मुझे कब लेके जा रहे हो camping करने? Actually, मैं camping तो कर ही नहीं सकती. I need to do glamping. I can't do camping. Oh God. Hi Pooja, how's it going? झलक का review. No, झलक का review तो हम करेंगे अभी. मेरा मतलब है, how did you like the episodes? Better than last week? Worse than last week? What do you think? Right off the bat, मुझे ये कहना है कि मुझे इस हफ्ते के performances पिछले हफ्ते से बहुत 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 ही ज्यादा better लगे. Yeah, What do you I was pleasantly surprised. I was amazed. The episode was full of emotions, full of fun, full of fiery performances, but there was a lot. There's a lot to say. I loved it. Why are you guys making fun of me? She's our Param Sundari. She is for sure. Hi, Mehek. Hey, Ashna. Hey, Prashant. Hi, YouTube. I mean, unknown, aka YouTube. AKA Nagin. Hey, Naveen. Long time no see. Okay. Yeah, Did I say Naveen, hi to everybody? Is that it? Oh, no. Here. Just hi Akbar. everyone. Hello, Hi hello. everyone. Hi beautiful people. There we go. Pooja gets it. Pooja gets why I'm wearing green. Madhuri Magic stole the show? No, I don't think so. I love Madhuri, like she wasn't the centerpiece. Yeah. What do you She think? looked beautiful, but she won the centerpiece for sure. She's always beautiful. Madhuri se koi Yeah. beautiful ho sakta hai life mein? I don't think so. Definitely She not. is just beautiful. Oh my god, ये ज़्यादा yellow yellow नहीं लग रहा आज. Change करूँ क्या? सूरज चमक रहा है. ये देखो, ये white better है. Or I look too white. Yeah, I think it's fine. You think No, it's I think it's fine. Yeah, it's fine. Right. Yes, yes, Mehek. This week, okay, I'm a very senti, emotional person. तो जो मुझे like feel करवा सकता है ना, कुछ भी, चाहे गुस्सा या खुशी या sadness, कुछ भी, I love it. And this week, technicalities तो होती हैं, वो judges करते हैं, लेकिन as far as the emotion goes, I was in love. I loved every single dance basically. मुझे like वो feel हुआ, जो family के साथ emotion जुड़े होते हैं,
You know, you feel that. And Yeah. some of the stories I found relatable, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के. I just thought there was a Yeah. connect. And सबकी families जो आई, conversations हुई, I just love it. Yeah, it was beautiful. I obviously felt a connect. I felt relatable. I had a few tears. I think I told you this backstage that I felt emotional. I don't want to come on today, but it was definitely good, a great episode. Gave me goosebumps, high empathy. Thanks for coming. But yeah, it was amazing. Indu Kandola, when I come to Vancouver, I am coming to your place and you are taking me glamping. Hey Umar, kaise ho? Hey Pooja, how's it going? Yes, I loved Nia too. Nia was It was a amazing. Nia was firecracker. amazing. Yes, yes, yes. I have unpopular opinion on Jhalak. So much Rona Dhona. That's okay. In my opinion, art is supposed to make you emotional, and dance is a form of art. So agar aap emotional hote ho, that's a great thing. In my Yeah, opinion, I loved it. Yeah. 100%. Hi Farha, how's it going? Kaise ho? That sucks. That sucks. Nani nahi dadi. Nani le. ये क्या है? दादी आउट हुई है, Dadi. which I feel is shocking, unfortunate, क्योंकि इस हफ्ते for the first time हमने अली को देखा, you know, not दादी. Yeah, लेकिन ये and I performance love दादी के that. ऊपर था. Yeah, it all sucks. There's no way Ali should have been eliminated, in my opinion. Ali was Yeah, better than Zorawar, you know. 100%. एंड अब ये नोटंकी, ये ड्रामा, ये कॉमेडी कौन करेगा? यू नो, Manish Paul. इज इट ऑडियंस स्कोर और जजेस कंबाइंड? आई थिंक इट्स कंबाइंड, क्योंकि अगर कंबाइंड ना होता तो वो Yeah, स्कोर्स नहीं देते, you know, yeah. It's which is definitely good. combined. Which is good because sometimes I feel like the audience is like, oh no, I don't care if my person sucks, but I love this person, so I'm gonna vote for this person. And I feel like at least the judges can keep it somewhat neutral. Does that make sense? Yeah, yeah, Yeah. absolutely. Gashmeer performance, so good. Gashmeer was good. Rubina, Yeah, Ruby was really good too. I loved it. there was a I lot of feel Gunjan surprise should have elements. participated in children's show, not with adults. I could be wrong. I don't think बच्चों को adults के साथ competition करना चाहिए. So I Yeah, agree. But अगर सिर्फ और सिर्फ dancing की बात होती, then Gunjan will kill everyone in the show. She's the best yeah, dancer she's there. definitely the winner then. Okay. Let's just start, है ना? Let's just Let's start. just start. Yeah. Okay, we were talking about Madhuri ना, तो चलो पहले इन judges की बात कर लें. Wow. Yeah, look How at that glam. Look beautiful at smile, that yaar. smile, that That chamak on her smile is face. everything. Madhuri is just so pretty, just so Yeah. pretty. And then I loved, well, not love, like he wears a lot of like oversized stuff these days, but his obviously D&G, you know, outfit is nice. It's out there. Yeah. He's literally looking like It, it, a Italy ka jhanda. it looks cool, but I don't think the sneakers, the shoes, like they look a bit off. I mean, they're Yeah. not bad for him, Even but Nora was looking so hot, so yeah, hot. like a Nora is a bubble gum. pataka, man. मुझे ये ड्रेस चाहिए नोरा की. Wow. Well, guys, Okay, super chats भेजो and फिर हम सुपर invest चैट करेंगे in भेजो this dress ताकि for मुझे Kirti. ये ड्रेस खरीदने के लिए पैसे मिले, guys. Yeah, I please, want this guys, dress. send super Tell Kino chats. to buy me this dress. I love it. Okay, first performance is our Nia. Can Wow. I say Nia for me is the front runner of this entire season so far. मुझे Nia इस show like से पहले मैं उसकी fan नहीं हूँ, मुझे वो पसंद भी नहीं है, लेकिन इस शो में जब से मैंने उसको देखा है, I love Nia. मुझे लगता है Yeah. इतनी powerful performance उसने दी है दोनों. And then people were saying ना, criticizing कि ये सिर्फ एक टाइप की performance करती है, एक टाइप की performance करती है, कुछ अलग करना चाहिए इसको. So I loved this performance. It was so different than, you know, जो उसने पिछले 2 हफ्तों से किया है, वो जो fierce and strong performance होती है, ये भी fierce and strong थी, लेकिन इसमें इतना emotion था, इतनी feeling उसने डाली थी. She was basically depicting, you know, her life post her father's death and how her brother helped her, you know,
with Yeah. everything in life. तो मुझे निया की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. I love the white costume जो प्लेन उसने डाला हुआ था. एंड देन यू नो जो लोगों की बकवास होती है जो उसने झेला है अपनी लाइफ में सो फॉर द स्ट्रगल्स एंड कैसे वो उसके ऊपर आते हैं उसके बाद काले काले निशान उसके ऊपर लग जाते हैं बिकॉज शी इज you know like a naive or a pure person and then all this galak from people come mudslinging jo kehte hain. So Yeah. I love the depiction of that. Mujhe bahut sundar laga tha ye performance and just look at that. उन्होंने फ्लोर वर्क इतना अच्छा किया. द कंटेम्पररी स्टाइल वाज अमेजिंग. मुझे लगता Yeah. है ये तरुण और जो निया की जोड़ी है ना, इट इज सो गुड. आई थिंक उसको पता है उसको कैसे चैनलाइज करना चाहिए, क्या क्या फील कर सकती है एंड वो दिखाती भी है. एंड जो एंड का पोर्शन आता है ना, आफ्टर द पीपल हाउंड हर, the crescendo picks up, the beat gets angrier, it gets faster, and her emotion changes, her face changes, she becomes this angrier person. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये परफॉर्मेंस एंड आई लव कि इतनी अप्रिसिएशन जो उसको मिली. इवन रूबीना सेड शी वाज क्राइंग कि मुझे इतना फील हुआ जो तू इमोट कर रही थी वो सीधे Yeah. यहाँ लगा. एंड 100% आई थिंक निया इज सच अ ब्यूटिफुल परफॉर्मर गाइज. Like, I'm not talking about her shakal, I'm talking about the emotions that she's bringing out. तो मुझे The बहुत अच्छा लगा. expressions. आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर एंड सिस्टर एज वेल. तो ये जो कनेक्शन होता है अपने सिबलिंग्स के साथ, वो मुझे फील हुआ कि चाहे दुनिया आपको ठुकरा दे, दुनिया can say all this shit about you, but your siblings are always going to be there and on your side, like आप कितनी भी बकवास कर लो अपने siblings के साथ, you can hate them, लेकिन कोई और कुछ नहीं कह सकता, to your Yeah. siblings. So I love this connection that she shares with her brother, and her brother came and supported her. She appreciated him. I love कि उसकी mom भी आई और कहती मैं आपको कहती नहीं हूँ thank you या hug नहीं करती लेकिन आज मैं करूंगी, because I Yeah. think all this hardship in Nia's life has made this wall, है ना? So she doesn't express herself as much even to her loved ones. And यहाँ पे she was breaking down that wall. So I really love it. उनकी lifts तो amazing होती है. उसका aerial work in the end, the tumbling she did on the aerial, Yeah. cables was amazing. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. What do you guys think? So definitely, I think she nailed it. The contemporary was epic. The floor work that she does when they're like literally between each other's legs and they're spinning on the Yes, floor, that movement yes, was like a highlight for me. I loved it. I loved, yes. the fierceness that she had, and that music's playing in the back. "Ke main tumko nahi chhodungi" from that Yes. Mardani movie. I loved it. The way she was, pouncing like a sherni, ke I'll do it. I want to fight my fears, and forget what people say. Mm-hmm. I'm here to win. Even when she was spinning in the end, they played a message, कि, बात उसकी होती है जिसमें बात हो and stuff. So I love that. Yeah, Even Karan Johar said it to her as well. कि people are going to talk about you. Why? Because तेरे yeah, में बात है. So just keep going. I loved yeah, it. I loved, obviously, everything about that act. I loved yeah. her emotions. The colleague that they put on her clothes, I was like, wow, damn. That was That just, so great. The imagery was it amazing for was that part. Yeah. great. The setup was good. The way she performed, there was like a Junoon inside her. I love that. I love the fact that her mother came. That hug moment was cute. Her mother's very beautiful, yaar. I was like, wow, her Yeah. mom doesn't even look like her Nia's mother. वो mom बड़ी does बहन not look लगती like है. her mom. Nia's mom looks like her older sister. Exactly, yeah. There's a resemblance between her and her brother as well. You could see that, and you could see that, that great bond that they have. I love the fact that she mentioned, कि, मेरे भाई के पास सिर्फ 6,000 rupees थे, and he went out of his way and he got me all these clothes for my college, for my first day. He sacrificed the happiness just for me. So I love Yes. that. I was like, damn, like people do so much for their siblings. Like that's amazing. So Yeah. commendable to see that. So I love the relationship they had. But for me on dance, I was like, wow. I love the fact that she got very good marks. Karan Johar obviously gave her a 9. He goes, "You're just an inch away from that 10, Yeah. but definitely you'll get there, and I want you to grow Yeah. even more." So I love that, and I think she definitely Yeah, but I deserved the mean, scores जो that she got. Madhuri and Nora ने उसको tens दिए थे, I had no problem with that क्योंकि मुझे Yeah, भी वो जबरदस्त performance लगी. But I also didn't have a problem with the 9 either. मुझे भी yeah, लगता है 100%. she could Yeah, be even better. So I she agreed could be with the better. scoring. And I love Yeah, कि Nora कहती, I loved every single thing about this performance. You are a Sherni, which we have yeah, said Nia is a Sherni, right, Odie? yeah. You're mute. You're mute, Odie.
I have always maintained that Nia is making me proud. I'm so proud कि Nia is doing it because I'm a huge fan of Nia Sharma. जब उसकी परफॉर्मेंस आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ हाईलाइट मोमेंट्स आई हैव टू मेंशन. एक जो उसका हेड फ्लोर स्पिन था और वो स्लाइड था, Oh, हेड स्लाइड था, दैट वाज बियॉन्ड ब्यूटी. Yes. इतना स्मूथ, इतना परफेक्ट, और स्टोरी टेलिंग वाज सो स्ट्रांग. कंटेम्प्रेरी का यूज ही होता है कि आप बगैर बोले ही सब कुछ दिखा रहे Yeah. होते हैं. मुझे अच्छी बात ये लगती है इस परफॉर्मेंस की, जो मैं आगे भी डिफरेंस बताऊंगा. जब आप गाना गा रहे हो और कंटेम्प्रेरी कर रहे हो, यू डोंट हैव टू लिप सिंक. हाँ, जब वो डायलॉग बाजी होती है तब आप करते हो, वो परफेक्ट लगता है. चाहे वो उसका एरियल स्पिन था. देयर वाज अ मोमेंट जहां पे तरुण ने उसको अपने कंधों पे बैक क्या नाम है करके उठाया. यू you नो know? वो ब्रदर का अपनी बहन को अपने कंधों पे उठाना और उसको ऊपर लेके जाना, दैट मोमेंट वाज सो Yeah. ब्यूटीफुल. आई वाज thoroughly teary eyed थ्रू आउट द परफॉर्मेंस. Yes. क्योंकि So वो beautiful. गूज बम्स देती है, पावर देती है. Nia is so lucky to have such a sibling, to have such a family member. और they are also lucky कि निया ने हार नहीं मानी. दुनिया आपको अगली बोले, दुनिया आपको स्लट शेम करे, दिस वुमन शोज गर्ल पावर ऑल द वे. Yeah. और वो लिविंग एग्जांपल बनती है. और अब डांस में जब वो उतरी है, बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस थी कि निया शर्मा पता नहीं क्या करेगी. शी इज Yeah. ओवर द टॉप, शी इज हाइपर, लाइक शी वाज सेइंग कि मैं हाइपर हूँ, मैं गालियां देती हूँ, मैं लड़ाका हूँ, Yeah. आई एम दिस एसिड माउथ. And I related to that too much. क्यों? क्योंकि I am like that probably in my life. People in my real life who know me, they know me कि जी इससे दूर रहो, ये तो कुछ बोल देगा. और इसका Yeah. रियल लाइफ बिग बॉस चलता है, ही इज टू डोमिनेंट एंड ही डजंट टेक बुलशिट. तो उसकी रीजन यही है कि आपको वो एक्सटीरियर बनाना पड़ जाता है. जब आप Exactly. इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, इट Yep. इज द एक्सपीरियंस दैट डिफाइन यू एज ए पर्सनैलिटी. सो निया yeah. शर्मा की जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस थी, वो लिविंग एग्जाम्पल थी कि आपने अपनी Yes. जर्नी कैसे दिखाई है. दिस मोमेंट जहां पे उसका मुंह कवर कर दिया कि तू तो शक्ल Yes. दिखाने काबिल नहीं है. आई लव्ड इट. I वो हाथ loved का आना, everything about this. And वो OD, ये हाथ. जो शक्ल वाली बात कर रहे हो, इसने कहा भी है ना, I've been told a lot for even at my appearance, how I look, चाहे वो रंग की बात हो, उसकी फीचर्स की Yeah. बात हो, ये होती है. एक तो उसकी दबंग पर्सनालिटी भी है. She doesn't fit in a box. And मुझे लगता है जब भी कोई लड़की बॉक्स में फिट नहीं होती ना, she receives a lot of backlash and stuff. ये forget Nia, ये आम लड़कियों के साथ भी होता है. Like me, for Yeah. example, so much shit has been said. So this But is I the think thing. it's because she's a strong woman, and we know that you're a strong बट woman as well. लेकिन So इट्स people नॉट, can't नहीं, टू stand मी. that. There's a lot of jealousy Yeah, and complexion that people have. इस वजह से yeah, कि strong woman out there, नो, they're आई डोंट, opinionated. आई इट्स नॉट अबाउट वुमन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट बिलीव कि ये वुमन और मैन को लेके है. it जब भी is. आप, There is नो, a lot. नॉट Patriarchy Mostly नॉट it's is for नॉट, women, ruined. from आई women नो, mostly, because Patriarchy is people cannot ruined. stand आई a strong woman एक these सेकंड, days. Yeah. एक सेकंड, लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस. मैं जब व्हेन आई एम सेइंग कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मैन, इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमन, बीट अ मैन. जब आपको पता है कि आप ऑड वन आउट हैं, आपको खुला छोड़ दिया गया है जिंदगी के अंदर, जब आपको पता है कि मैंने ही सब कुछ करना है, तो पीपल आर ऑलवेज देयर टू पुल यू डाउन, बीट अ गाय और बीट अ गर्ल. और Oh वहां पे हम yeah, लड़की but की बात, या we're talking about Nia's struggle as a woman in तो the मैं in वही, that या society. Yeah. या तो Yeah. इन दैट केस वही बात है कि निया, चाहे वो लड़की की जर्नी हो, लड़के की हो, बिकॉज बीइंग अ गाय आई एम रिलेटिंग टू दिस गर्ल. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वहां पे तो नजर आता है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस में क्या दिया. और तरुण को 100 पॉइंट्स बहुत शाबाशी जाती है कि Yeah. वो इतना बेस्ट उसका निकलवा रहा है. अब नजर आता है कि जहां आर्टिस्ट प्रूव करने पे उतरा है, निया इज हियर टू प्रूव इट एवरीबडी रॉन्ग. जब उसने पिछले हफ्ते बोला था, मैं इन सबको निकलता देखना चाहती हूँ, आई लव यू गाइस बट आई वांट टू एलिमिनेट यू. एंड फॉर दैट शी इज डूइंग हर दी लेवल बेस्ट. आई लव फॉर द फैक्ट उसको टेंस मिले. बहुत से लोग कहते हैं जी 10 क्यों दे दिए, बड़ी जल्दी दे दी है, परफेक्ट तो नहीं था. परफेक्ट She नहीं था deserved it. वो. मुझे लगता है कि बीट माधुरी, बीट नोरा, वो जर्नी से इतना कनेक्ट कर चुके थे और परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी थी, Yes. स्टेप्स इतने शानदार थे कि आपको खड़ा होना पड़ता है सीट से. आई रिमेम्बर करण जौहर ने खुद खड़े होकर तालीम चाहिए, यार इट रिक्वायर्स स्टैंडिंग ओवेशन, इट डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन. और Yeah. फिर जब उसकी मदर आती है, उसके भाई के वो देख के आई वाज सो वीपिंग. मेरे ख्याल से जितना निया थ्रू आउट एपिसोड में सबकी स्टोरी पे रोई है, उतना ही मैं रो रहा था. अपनी स्टोरी पे तो वो रोई तो रोई, Mm-hmm. बाकियों पे भी रोती रही. सो आई थिंक डेफिनेटली, जब आप हमने पिछले 2-3 एपिसोडों में देखा है, रुबीना आके पहला परफॉर्मेंस देती तो हम कहते हैं प्रेशर होगा परफॉर्मेंस का. निया वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस गाइस. Yeah. और क्या I loved Yeah. it. परफॉर्मेंस थी. ठीक है, स्टैंडर्ड फाड़, क्या नाम है, बार तोड़ परफॉर्मेंस थी.
तो नजर आता है कि जी पहला परफॉर्मेंस हो आखिरी परफॉर्मेंस हो डजंट मैटर. अगर आपको Mm-hmm. पता है कि मुझे प्रूव करना है यही मेरा चांस है, शी डिड हर बेस्ट and she Mm-hmm. deserved those 29. I was even happy with the 9 also. मुझे कोई गिला नहीं था. Yeah. I was very happy with the 10 even. Yes, I loved Yeah, it. 100%. I didn't have a problem with either of those scores. Okay, so next one is Niti Wow. Taylor. Okay, so obviously Niti Taylor ने यहाँ अपनी फैमिली की स्टोरी नहीं सुनाई. उसने तू जो मिला ये जो गाना है बजरंगी जान कह रही हूँ बजरंगी भाईजान का जो गाना है बहुत ब्यूटीफुल गाना है. और इस गाने पे उसने करण जौहर और उसके बच्चों का डिपिक्शन दिया जो उसके ट्विंस हैं यश एंड रूही. I have to say I would have loved if Niti did her own family story, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी कि उसने करण के लिए ये किया. एंड जो करण का इमोशनल साइड हमें दिखा इट वाज सो ब्यूटीफुल. कितना लविंग एंड केयरिंग ये बंदा है. अपने ऑब्वियसली सब होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत लेट हुआ ये सब. वी नो ऑल द शिट ही हैज गॉन थ्रू इन हिज लाइफ. सो आई Yeah. लव कि इसकी लाइफ में ये टर्न आया है इसके बच्चों के साथ. क्योंकि like we said, everyone can turn their eye away from you, but you have your kids. He has his kids now. और उसने ये कहा भी कि आकाश और नीति को देख के मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे they're like grown up and they are performing because they did this Yeah. whole cute thing. I liked the choreography. It was fun. It was simple. It was cute. It was energetic. But जो emotional tug maybe नीति अपने performance से लेके आ सकती थी if she was talking about her own family, that was a little missing for me. But I still believe that Karan Johar's emotionals were beautiful. This freestyle thing they did was great. Like, and yeah, is it standing out compared to like Nia's performance? No, it was just like a middle kind of a performance for me. I think Niti और भी better कर सकती है. मुझे लगता है choreography भी इतनी mind blowing नहीं थी. लेकिन जो करण का response था वो mind blowing था. And I love करण कहता कि मैं अपने इमोशंस में इतना गुम था that I couldn't even judge कि क्या स्टेप हुई क्या नहीं हुई. तो whatever Madhuri gives you is what I will give you because he goes मैं खुद के बच्चों को कैसे अब जज करूं मेरी खुद की स्टोरी को. Yeah. So at least he acknowledged that he doesn't have that line he can make. तो वो मुझे पसंद था. आई लव माधुरी ने एक लाइन कही थी फॉर नीति कि उसके चेहरे पे और परफॉर्मेंस में एक इनोसेंस दिखती है which I think is so true. Gunjan ke baad, I think Niti is the one that brings that youth and freshness to the show. Jahan dusre sab thode mature hain. I'm not just talking about age. I'm talking about personalities as well. Yahan pe Niti shows that youth, shows that freshness to me. But was it one of my favorite performances? No. Could she have done better? Yes. Do I think 999 milne chahiye the? Agar निया को 9 मिला था फॉर हर परफॉर्मेंस तो नीति को मुझे लगता है 9 नहीं मिलना चाहिए था. मे बी 8 बट दैट्स व्हाट आई थिंक. व्हाट डू यू गाइस थिंक? So I definitely found the act cute. I obviously felt that choreography mein it could have gone on a different level and it would have become better. I wanted to see more dance. Isme zyada emotions tha. Obviously opening the curtains and then you have the photo frames of Karan with his kids. I like that part. I like the part jab wo phool baras rahe the and stuff and they're Suji, flying in the if air. you cannot respect a man for being a man, you need to like reconsider whether you should be in this chat. We do not like Yeah. any type of discrimination based on anything. So calling Karan Chachi is not acceptable, and I am gonna mute Yeah. you. That's Okay. not So, acceptable, Suji yeah, Panda. at Come on, all. like, That's like grow up, ridiculous. I please. think that's We're not nonsense. here to You don't have character to like assassinate Karan, anybody. but why are you calling him Chachi? That's what I want to know. Okay, sorry, Harris. Yeah, Go. that's unfair. Yeah, so I do feel the highlight for me was the part, when they're jumping in the air and you got all the flowers coming and then they open the Mhm. curtains, with the kids and stuff. I liked that. I wanted to see more dance. I wanted to see more choreography, but I liked, family week hai to emotions Yeah. dalo. So I like that. The dedication to Karan was obviously cute, but if it was like you said, Nia did it for her own family, usme zyada maza aata. You could see that emotion in her face, in her Niti expressions more. 27 hai? What? Wow. Wow. I thought she was like maybe Damn. 21, 22. Yeah, Wow. that's what I But thought. still, But she's yeah, still youthful. Yeah. she's 27 is not youthful. She's old. got that chulbuliness inside her, and I like that. I Yeah. find that really cute. After Gunjan, of course, like you said, she has that fun and that kitty side to her, which is cute, and she's mature as well, which is nice. I loved it. I think there's like Nora said that you guys have a great understanding in art between you two. So I totally agree because
he is definitely, Akash is definitely a good choreographer. We've seen that. He has these great steps, his beat, his moves, and everything. That's nice. I love the fact that Karan Johar even melted and opened up and said कि मैंने अपने बच्चों का नाम रखा based on my parents, Yash and Ruhi. Obviously, Hiru ji का नाम उल्टा करके and stuff. So I like that. I like the emotion side to it. So it was touching, but I wanted to see more from that. I wanted to see more. Yeah, I think थोड़े से that feeling में थोड़ी सी कमी थी शायद. That's what I yeah, feel. But it was definitely a cute act. yeah. What do you So, think, and Odie? plus you said obviously did they deserve the 9? I also feel okay, no, the 9. If Nia's got Yeah, I 9, think that's a yeah, little at high. least 9 was a little too high, yeah, for this act. 8 is fine, I believe, but I think obviously it was like Karan Johar got melted. He couldn't judge. It was full of Yeah, emotion, so maybe that's why. But good yeah, attempt though. yeah. Niti's performance was quite controversial for me, to be very honest, because I wanted to see her journey. To be very honest, I was not interested कि वो करण की स्टोरी दिखा रही हैं. This I would have expected from गुंजन. गुंजन करण की स्टोरी दिखा देती कि यश रूही जो है वो तेजस और गुंजन बन जाते according to me because they are kids. और अगर आपने वो स्टोरी दिखानी है नीति की, मतलब चाहे वो शी इज 21 और शी इज 27 और शी इज 28, डजंट मैटर टू मी. लेकिन क्योंकि यस शी हैज दिस एंजेलिक क्यूट लुक अबाउट हर, शी वो कनेक्ट कर लेती है आपको अपनी, उसकी स्माइल ही इतनी कंटेजियस है कि व्हेन शी स्माइल्स शी इज सो ब्यूटीफुल, यू नो. तो लेकिन जहां तक उसकी परफॉर्मेंस की बात है, एज एन एक्ट इफ आई सी, आई लव द फॉर द फैक्ट कि जी वो क्या नाम है, डांस उनका अच्छा था, लेकिन मुझे कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नजर नहीं आई. सॉरी गाइस, बट मुझे लगता था कि नीति से आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि लास्ट हफ्ते उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जजेस ने क्योंकि उसको अच्छा स्कोर नहीं किया था, इस हफ्ते मेरा ख्याल से जजेस ने कर दिया कि नहीं नहीं लास्ट टाइम क्योंकि सोशल मीडिया पे उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, क्या नाम है, नोरा फतेही को, कि जी इसने बहुत हार्श तरीके से नीति को क्रिटिसाइज किया लास्ट टाइम और उसको स्कोर नहीं ठीक दिए. इस दफा तो उन्होंने स्कोर बहुत बेहतर दे दिए. मुझे स्कोर से इशू इसलिए होता है क्योंकि शायद हर एक का फैमिली वीक है, तो वाई करन फैमिली, एंड इफ करन फैमिली हैज टू बी प्रेजेंटेड लाइक आई सेड, गुंजन एंड तेजस वर द परफेक्ट एग्जांपल. लेकिन जो दिखाया गया, जो दर्शाया गया, करण का इमोशनल होना मुझे इतना इमोशनल कर गया, क्योंकि आई हैव सीन दिस बॉय व्हेन ही वाज, कुछ कुछ होता है या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जब करण जौहर आया था, अब उसको इस लेवल पे देते हैं, ही इज अ वॉकिंग ट्रोलर्स, डिलाइट के ट्रोल उसको लोग करते रहते हैं, बार बार करते हैं, उसको बहुत ज्यादा सुनाते हैं. तो वो अपनी जब लाइव देता है, जब उसके बेटे ने बोला कि डाडा व्हाई यू वेयर सो शिमरी क्लोथ्स Yeah, एंड that's व्हाई so दिस, cute. व्हाई दिस पाउट, आई वाज लाइक मेरे बच्चे होंगे ना वो मुझे ऐसे ही बोलेंगे, why do you pout, why this notanki every time. So I loved it, and I don't know why, maybe I'm wrong, but Karan Johar to me he was looking like a पार शक्ति खुराना. वो जो आयुष का छोटा भाई आयुष्मान खुराना का, बड़ी बड़ी ग्लासेस पहनता है, इस तरह के बाल खड़े रखता है, आई थॉट वो पार शक्ति खुराना लग रहा है. लेकिन having said that, performance as a dance was good, as a story to me I wanted something else. नीति का कसूर Yeah. नहीं है, आकाश या जो मेकर्स या वो जो चॉइस देते हैं कि जी गाना बहुत अच्छा था, नो डाउट, गाना लेकिन तो Ghana अमेजिंग was है, कोऑर्डिनेशन. मुझे beautiful. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि करण की फैमिली उन्होंने चूज की. आई लव इट, आई थिंक इट वाज क्यूट. एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर वो अपना इमोशन ऑब्वियसली अपने फैमिली की तरफ उसने नहीं दिखाया, मे बी शी डिडंट वांट टू. ये भी हो सकता है कि Yeah. शी इज नॉट कंफर्टेबल हाँ, ब्रिंगिंग बट ऑल ऑफ दैट्स दैट फाइन, इन. दैट्स हाँ, फाइन, तो या मुझे या लगता है कि मे बी वो कंफर्ट नहीं उन्होंने देखा, तो आई मीन शी डिडंट फील, सो शी डिड इट बिकॉज आई थिंक ये जो उसने किया भी, एंड द वे ही वाज फीलिंग and the way he hugged and kissed them, मुझे लगा है कि फ्यूचर में you आई will वाज see Niti वेटिंग टू. Taylor in a Dharma production. मुझे ये लगता है because लेकिन Yeah. लेकिन and also जैसे अभी मुझे ये भी कहना है, I agree कि social media है तो trolling बहुत होनी है, whether for good or for bad. It doesn't matter what anyone says or does. You were saying Nora was trolled because of the scores. I hate that people get trolled for stupid reasons. I also hate when people change themselves because they're being trolled. तो अगर Yeah. एग्जैक्टली. नोरा को परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती. आई डोंट केयर, उसको हजार गालियां दे दो, लेकिन स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. सो आई होप हाँ दैट शी लेकिन डजंट फील प्रेशर कि हाय हाय मुझे ट्रोलिंग ना हो जाए तो मैं अच्छा स्कोर दे देती हूँ. आई डोंट थिंक शी इज लाइक दैट. लेकिन आई Yeah. you can fall prey to that because people are हाँ, vicious. रियल पीपल आर रियली वाइल्ड दीज डेज. Yeah. दूसरा ये कि जब नोरा वाली में बात कर रहा था अभी,
बिकॉज वी फील लाइक शी इज हाई रेटेड दिस टाइम, शी इज हाईली नंबर्ड, यू नो, उसको स्कोर बहुत अच्छा मिला है, जो कि अगर मैं परफॉर्म दूसरी परफॉर्मेंस से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली वो मुझे ज्यादा बेहतर लगी थी. आई लव नीति. ठीक है, शी नीति टिल इज ब्यूटीफुल, शी डांसेस रेडी वेल बाय द वे, मुश्किल स्टेप्स भी अच्छे करती है. Yeah. यहाँ यू नो, Yeah. जैसे अभी कीर्ति ने बड़ा अच्छा कहा जी कि मे बी शी वाजंट विलिंग टू शो हर परफॉर्मेंस, बट आई वाज जस्ट गिविंग माय एग्जांपल, Yeah, yeah, मतलब yeah. माय Yeah. ओपिनियन क्या, कि आई विश कि वो बच्चे वाला दिखाए थे. लेकिन जब मैंने वो बोला कि जब उसे दिखाना शुरू कर दिया और जब यश और रूही का पोर्शन आता है और करण का इमोशनल लाइफ वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज Mm-hmm. Yeah. ओवरवेलमिंग. इट Yeah. वाजंट हार्ट ब्रेकिंग, इट वाज 100%. ओवरवेलमिंग. It was इतनी खुशी हो Overwhelming. रही. It overwhelming. was Yeah. या, overwhelming इट वाज considering, वेरी ओवरवेलमिंग. everything he's gone through. That I feel Yeah. people just love to hate. Unfortunately, we need more love in this world. 100%. 100%. Yeah. We Yeah. do. Yeah, Abibi Suji hasn't learned. Stop एक trying to सेकंड, justify what you're doing. It's ridiculous. एक Okay. सेकंड, Yeah. व्हाट हैज ही There's रिटन? no need to खुद मनीष, justify खुद this. करण को चाची की तरह ट्रीट करता है. मैंने क्या बोला, गलत बोल दिया? Like सूजी really? पांडा, एक सेकंड, सूजी पांडा, लेट मी टेल यू वन थिंग. ये हम इसको फैमिली ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें नहीं पसंद है. इट फील्स लाइक यू आर, यू नो, होमोफोबिक कमेंट कर रहे हो आप कि वो तो चाची है, या यू Yeah. नो, इट कम अक्रॉस लाइक दैट. तो ऐसे मत करो, डजंट लुक नाइस, एंड यू आर बेटर देन दिस. ट्रस्ट मी, Yeah. सूजी पांडा, यू आर Exactly. बेटर देन दिस. Like Suji, सो I डोंट डू nobody दिस. is surrendered. या, appreciating it. So please stop. Please stop. या, Okay. या. Yeah. So next performance, you guys, I have to say, I don't know कि emotional है. This is why this performance came about. या जो भी है, ये जो connect, जो feeling में चाहती थी ना कि पारस दे, 100% मुझे लगता है this was Paras's best performance by far. ये जो उसका emotion था over the loss of his father, not having his father in his life, I think it was so great to see कैसे वो affect हो सकता है, हुआ है. जो उसकी जर्नी दिखाई परफॉर्मेंस से पहले ही was freaking out crying. तो मुझे लगा either he's gonna forget everything or he will channelize everything. और उसने channelize किया. एक तो गाना कितना beautiful है, कितनी बातें याद आती हैं, like such a beautiful song. उसके ऊपर Yeah. choreography कितनी beautiful थी. ये concept जो father की डायरी थी, right, वो श्वेता पन्ना बन के आई थी. पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि श्वेता as a choreographer is highly disappointing for me. Today or this past weekend बहुत अच्छी choreography लगी मुझे उसकी. And मुझे ये भी you know जो शिकायत थी कि इन दोनों में like क्या कहते हैं, connection केमिस्ट्री. नहीं नजर आता, chemistry नहीं नजर आती. यहाँ पे वो connection था because she felt his story, obviously he felt his story. मुझे बहुत पसंद था. एक section आया था where Paras and Shweta make a pose और पीछे नजर आ जाती है photo where Paras is with his dad in that same pose. I thought that was beautiful. Obviously, end was devastating, right? He falls onto the diary, he sees his father's photo, and he's just, you know, laying there. I thought that was so heart touching. Yeah. मुझे उनके contemporary जो moves आए थे बहुत पसंद है. You know, contemporary is a dance style where emotions feel होते हैं. You can interpret the lyrics. और मुझे लगता है कि lyrics बहुत ही ज्यादा उन्होंने अच्छी तरह से interpret किए थे. And I love Paras जो उसने कहा कि I'm living my father's dream. He never told me to do this. Like, and I feel like through me, he's living on. And उसकी sister ने जो कहा कि हमारे ना कर्मों का फल है Paras. So that shows that what a Yeah. great guy he is. I just loved it. I'm so happy for Paras क्योंकि I have been his number one critic since promo shoot, है ना, कि ये stiff लगता है, इसका कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा. लेकिन can I say Paras was so good. I loved his performance. मुझे लगता है जो उसको I think nines मिले हैं ना उसको भी, हाँ, nines मिले हैं, Yeah. 27 total. I think it was perfect. I think कि इसने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया. What do you guys think? So I definitely think he's obviously brought redemption. He's redeemed himself in this. I loved it, and I wanted to see more of Paras, and I was like, wow, this is Yeah. surprising. I love the emotional side. I loved, the tasveer when he's on the floor with his father in that photo. That was emotional for me. Even when his choreographer's on the floor and he's holding her, and she's like literally getting out of breath. That part just it literally got me emotional. I was like, damn, what's going on? So I love that part. I love the fact they used the contemporary. The choreography was good. The steps, the hath ka murna, the Yes. footwork.
everything was so beautifully done, and you could feel uske emotions mein, uski aankhon mein wo dard nazar aa raha tha, and I think Like that's why it Harris, came look out at so that photo beautiful. of him. Look at that photo of him. He's holding, his dad's page, ye jo Shweta bani hui hai, and look at his face. Yeah, Look at that emotion. It's yeah. just beautiful. Yes. I loved it. I loved the whole concept of that diary. Even when in the beginning they play an audio where his dad goes, "Okay, I'm always gonna love you no matter what." That was like, Yes. wow. I loved his story. He even mentioned that I was struggling in Mumbai. I had no money. या तो बस के लिए पैसे थे या फिर dinner के लिए. And my dad always wanted me to become an actor, and I'm living his dream on. So I love that. And I do feel that seeing this, like his father must be proud. Like he's done something so beautiful in that, tribute to his father. So I loved it. I loved his relationship with his sister. So I think that for me the performance was just full of love, love, love. That's all I can say. Yeah. Paras has shown such an immense growth. I was totally surprised, and I was pleasantly surprised, to be very Akbar, honest. I'm not talking about खतरों के खिलाड़ी here. मुझे नहीं पता तुषार जीता है या नहीं. मैं उसकी पीआर नहीं हूँ. मुझे कैसे पता होगा? अकबर शेख इंशाल्लाह वो जीतेगा, और अगर नहीं Yeah, जीता I तो फैसल hope. I जीतेगा. hope. जस्ट जस्ट प्रे, या तुषार जीते या फैसल जीते. मेरी Yeah. बैट्स इन दोनों पे. आई लव देम. Yes. अच्छा जी, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट पारस. पारस इमेंसली सरप्राइज मी. आई वाज सो हैप्पी. मुझे असल में अच्छी बात सबसे ये लगी कि ये जो कंटेम्प्रेरी दिखाया, ये जो लिरिकल दिखाया, ओवर इमोशनल नहीं किया. मतलब पर एज एन फेशियल एक्सप्रेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ही अंडरप्लेड इट ब्यूटीफुली. वो स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ी थी. वो जो एक जर्नी उसने अपने फादर के साथ की दिखाई है कि कितनी बातें याद आती हैं. श्वेता कोरियोग्राफ्ड इट सो ब्यूटीफुली, एंड आई कुडंट बिलीव कि ये Yeah. वही परफॉर्मर है जो लास्ट टाइम टांगे उल्टी सीधी पकड़े थे दूसरे. ये वाज लाइक, Rishik, I love that you're saying कि love and respect, no more filth, 100%. लेकिन हमें super chat चाहिए. चाहिए हमें भी. ऋषिक बहुत अच्छे Yeah. कमेंट्स करते हैं लेकिन सुपर चैट नहीं करते हैं. Super chat करो अच्छा, ना. We need it. Come on, guys. Okay, Odie, I'm sorry. I just thought that was funny. Okay, go. अच्छा, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट पारस. पारस इमेंसली इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, और अब वाकई लगता है कि वो ठहराव जो मुझे एक परफॉर्मेंस में चाहिए था, स्पेशली गाने को कंसिडर करके, स्टोरी टेलिंग को कंसिडर करके, ओवर इमोशनल होके फेक. क्योंकि जब डांस के अंदर आप इस तरह की परफॉर्मेंस लेके आते हो, थोड़ा सा भी अगर आपने ऊपर नीचे 19-20 कर दिया, हल्का सा नमक एक्स्ट्रा डाल दिया, तो फिर जेन्युइन नहीं लगता. इट वाज टू जेन्युइन फॉर मी. इट वाज हार्ट फेल्ट. इट वाज ब्यूटीफुली स्कोर्ड. एंड आई रियली विश के पारस अब उन बंदों में आ जाए जो हर हफ्ते वी लुक अप टू, जैसे निया शर्मा. टू मी शी इज द बेस्ट राइट नाउ. कश्मीर इज द बेस्ट राइट नाउ. तो पारस उनके लेवल पे आ सकता है, उनको टक्कर देने इजीली. लव्ड इट. Yeah. Yeah, I think 100% मुझे भी उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. Okay, the next one I have to say, जहां पिछले हफ्ते I was not that happy, this week I am so happy with Rubina, guys. मुझे Rubina का performance बहुत अच्छा लगा. मुझे ये choreography बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी because once again it's contemporary. Guys, हम जो कह रहे थे ना कि ये जो कनेक्शन होना चाहिए कपल के बीच में, वो नहीं नजर आ रहा. रूबीना बहुत परफेक्शनिस्ट स्टैकाटो लग रही है. इस परफॉर्मेंस में वो जो लाइक she let loose. She felt every lyric. बेख्याली, एक तो गाना ही इतना अमेजिंग है. एंड जो उसने स्टोरी डिपिक्ट की हस्बैंड एंड वाइफ में, कैसे अप एंड डाउन आता है, especially in her journey that we know this separation trial that was almost going to happen, divorce तक बात आ गई थी. तो उसे इतने अच्छे से डिपिक्ट किया. आई फील कि सनम डिड an amazing job with this choreography. जो फील लेके आई, especially that move, you see that, it's like she's reaching out, extending, and then she comes all the way down. It was so beautiful. मुझे लगता है जो उसका solo Yeah. section था वो थोड़ा और powerful हो सकता था, लेकिन I still Yeah. didn't mind it at all. The best part was जब जब अभिनव की आवाज आई थी ना कि Rubina, I'm never gonna give up on you. I'm not gonna give up on you. We're gonna make this happen. I felt so emotional क्योंकि ये जो Rubina है, Big Boss में, we became connected with them as a couple. So it was just so beautiful to see that. And every relationship, marriage has ups and downs. And, it's not every marriage makes it. Some marriages do make it. So I was really touched by this performance. I was really emotional watching this. I just loved it. I think this is the type of performances we want from Rubina.
Not Miss Perfectionist, not Miss, cross all the T's and dot all the I's. This lady who lets loose and feels every emotion. She was so connected to this. It was so beautiful to see. What do you think? So Kirti, I think for sure she's upped her game this time, and I'm glad Yes. she has. And I want to say Sanam, like I'm definitely happy कि उसने थोड़ा सा ख्याल रखा है, and he's improved on choreography. So I like that. I do feel कि he's probably watched our review from last time and worked on choreography, because we all said कि इसमें Sanam का fault है कि he's such an amazing dancer, but choreography में कुछ missing था. And I think he's added that in there. I love the emotions. पिछली time I said कि when he was making those emotional faces and stuff, I found it cringe, but this time I loved it. I think it was suitable for the song, for the performance. Hmm. That whole step when she's literally going like like a dolphin, she's going down like you just spoke about. I love that. I That was loved nice. it. That for me, that was a highlight. The part obviously when she comes solo, I wanted to see more in that. I thought she's gonna get like Hmm. fairs, like like Nia does in her act and stuff. So I wanted to see that. I wanted to take her barhas out and stuff. I Yes. wanted to see more of that act. I think I that would have just just think given her ये that. जो मैं कह रही हूँ ना, for me it was just good to see her not in staccato form. It was Yeah, just great to see her feel the lyrics. I know कि 100% perfection उसके dance में नहीं था, लेकिन that yeah, 100% emotion and feel was there. And for me, the dancing was better than the previous 2 weeks. For yeah. me hundred personally, percent. I It was connected with this definitely dance better. way more. Yeah, But I feel just in that solo part for a few seconds, I think it should have just lasted longer. I think that would have just, given her that extra one or two marks. So I do feel कि वहाँ पे थोड़ी सी कमी थी, but it was beautiful. It was acted in an amazing way. And I do want to say, Rubina, like, wow, boss lady for sure, because I do believe it takes a lot of guts to come on national TV and talk about your relationship. Like she mentioned, कि Abhinav, I clearly said to him कि हमारी नहीं बनती, I want a divorce. And then he came back to me in the room, knocked on the door. We were living like strangers. And he said, you know what, Ruby, I'm not going to give up on you. So I love that. I think yeah, it I was love that. beautiful. I Let love me she just get mentioned this that. real quick, Harris. Mr. Unknown, I liked it, but Madhuri ji always has to criticize. That's her job. वो judge है तो थोड़ा Yeah, criticism तो बनता है. Even we are she saying कि knows what she's थोड़ा talking और she about. needs to push herself. लेकिन I feel Rubina की trajectory अब थोड़ी ऊपर गई है compared to the last Yeah. 2 weeks. Yeah. 100%. And with Madhuri, she knows what she's talking about. Like, she's got years of experience. She's amazing. She's wow. Like, nobody can beat her. So, what she knows in dance is A to Z. Well, she's the dance academy. So, she can't go wrong anywhere. Odi, what do you Yeah. think? Rubina's performance was definitely better than the last two performances. I think by far this Yeah. was her better performance. I'll not say her best performance, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जो पूरा पोर्शन था शुरू का, बेख्याली सच अ स्ट्रॉन्ग सॉन्ग. Oh, आई लव दिस सॉन्ग. I love ठीक it. है. और लेकिन मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी उतनी तगड़ी मुझे नहीं लगी. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो माधवी ने बोला कि उसका सोलो पोर्शन को पसंद नहीं है, मुझे सोलो पोर्शन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सोलो में जब वो नीचे गई उन्होंने बालों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया. ऑल्दो आई फील लाइक वो जो उनके बाल थे वो एफ्रो लुक ज्यादा दे रहे थे मुझे, I वो जिस तरह से loved खोले it. हुए. आई It was लव इट दो. या beautiful. अच्छी The सच wind blowing. It was so filmy. शी इज सो ब्यूटीफुल विद हर हेयर. उसका और दूसरा ये सिंदूर कितना pretty लग रहा था. Her एग्जैक्टली सिंदूर. Yeah. मुझे उनका सोलो पोर्शन रुबीना का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अगर हम देखें गौर से जब वो नीचे जाती हैं, हर लेग पोर्शन जो नीचे एक नी पे जाके दूसरी लेग को स्नेक की तरह वैक करती हैं, आई Yes, लव्ड इट. loved ठीक है. it. वो बेचैनी दिखाती है, वो बेख्याली दिखाती है. एंड टू मी हाईलाइट हैज टू बी क्या नाम है, अभिनव वॉइस, क्योंकि वो जो उन्होंने पूरा सेटअप Yes. रखा हुआ था घर का, मुझे लगा घर का इस्तेमाल अच्छा नहीं किया जा रहा. आई रियली वांटेड मोर. जैसे ही Mhm. वो सोलो पोर्शन खत्म होता है, पीछे से आके जो उन्होंने लीप ऑफ Yes, फेथ that लिया, leap. आई लव्ड इट. I loved ठीक है. it. Yeah. आई लव्ड इट. और ये जो हम बार बार कीर्ति, कैन यू प्लीज शो दैट इमेज अगेन, वो जो हमने स्लाइड रखी हुई है रूबीना की. Yes, this extension moment, it is so beautiful. So But beautiful. I still believe she could have extended more, क्योंकि ये चीज Rubina is so athletic, Rubina is so in shape, Rubina is so fragile कि वो इसको और ज्यादा खींच सकती थी. मुझे लगता है सनम को थोड़ा टीका लगाना जरूरी है, क्योंकि सनम जो है
वो मुझे लगता है उतना अच्छा अपना 100% नहीं दे रहे। वो अभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। मेरी शिकायत रुबीना से बिल्कुल नहीं है, मेरी शिकायत अभी भी सनम से ही है, क्योंकि सनम मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द पिक्चर, वो जो दरमियान में नीचे सोलो खड़ी हुई है, इट इज एक्सूडिंग पावर, इट इज एक्सूडिंग फ्रस्ट्रेशन, इट इज एक्सूडिंग जो मैरिज के अंदर ट्रबल आती है, जो आपके अंदर की Yeah. फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है। शी इज द एपिटमी ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो रुबीना को एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में की बीट बात कर। कर रहे हो ओडी, ये जो फोटो है where सनम is holding her from the back, you see that angst on her face. I loved it. ये जो पूरे यस, लेफ्ट कॉर्नर में है. Oh, whoops, I took Odi out instead. Sorry Odi, हाँ बोलो. नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो फिर ये चीज थी कि जब रुबीना की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, आई स्टिल वांट मोर। क्यों? क्योंकि आई वांट टू सी हर ऑन टॉप। शी इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेंडर्स, और मुझे पता है कि उसके टैलेंट को अभी टैप इन नहीं किया गया जितना अच्छे तरीके से वैरायटी के साथ तरन क्या नाम है काम कर रहे हैं निया के ऊपर, रोमशा काम कर रही है कश्मीर के ऊपर, Yeah. सो एंड सो। अब श्वेता काम कर रही हैं क्या नाम है पारस के ऊपर, अमृता पे काम कर रहा है प्रतीक। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा, क्योंकि सनम का इन सबसे एक्सपीरियंस ज्यादा है, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि या वो अपने सेलिब्रिटी के साथ कोऑर्डिनेशन का मसला है, कंफर्ट का मसला है, किस चीज का मसला है। आई रियली वांट कि सनम खुद को एक एनर्जी बूस्टर लगवाएं और खुल के अबैंडन करें बॉलीवुड। शादी का कंसेप्ट है, मैरिज का प्रॉब्लम है, ये बॉलीवुड और स्पेशली करण जौहर की तो फेवरेट जॉनर है। मैरिज का Yeah. प्रॉब्लम, But मैरिज ट्रबल। I think Rubina wanted to depict this turmoil in her relationship. तो That उसमें term all that yeah that term all was perfect. Like I said कि मेरे लिए कोरियोग्राफी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। अभिनव की वॉइस का आना, इट गेव मी गूज बम्स। मेरे सामने तो oh, अभिनव की शक्ल आ जाती है, I मैं love उसकी आवाज Rubina. सुनता, Yeah. Yes. मैं जब उसकी आवाज सुनता हूँ मेरे आंखों से सनम गायब हो गया था, मुझे अभिनव की शक्ल नजर आती है रुबीना। आई Yeah. एम नॉट गोना गिव अप ऑन यू। और जिस तरह से Oh, रुबीना ने एक्सप्लेन किया कि मैंने उसको जाके बोला आई वांट अ सेपरेशन, आई वांट अ डिवोर्स, और मैं चली गई कह के, और वो फिर कुछ yeah. देर बाद मेरे पास आया। मुझे Yeah. लगा I was like, oh. मैं अपनी आंखों से ये सब होता देख रहा हूँ कि रुबीना गई है Yeah, अभिनव के and पास। I think इट वाज it's सो ब्यूटीफुल। because we saw them in Big Boss. तो वो जो we या love Yeah. Abhinav, we love Rubina separately. लेकिन as a couple, we love them so much. तो उनकी जब बात होती है, we just feel that connect, you know. Yeah. And एंड आई रियली विश, हाँ, go ahead. एंड आई रियली विश जैसे सब आगे थे, काश अभिनव आ जाता I सरप्राइज देने, know, but he's मेरा दिन gone. बन He's जाता। not there. मे- He's on या he's on a माउंटेनियरिंग, या हाँ. माउंटेनियरिंग, आई हैव सीन Mhm. दैट। या आई लव इट। हाँ, तो I think जो scores उसको मिले 8, you know, a part of me wanted the 9, but I think that's because I'm a Ruby इट fan वाज and I would love to परफेक्ट। have that या 9. I think लेकिन 8 I was think that 8 perfect. is Yeah. fine. I think उसको 8s मिल रहे हैं since she has started. लेकिन for me, this 8 is more than the past 8s. मुझे लगता Yeah. है एग्जैक्टली। 100%. definite improvement है. Hopefully next week there's even more improvement क्योंकि ये journey है पूरी की पूरी, you know. So I feel like एंड as more and more happens, I think Sanam और उसकी chemistry बैठेगी, they will figure it out. क्योंकि I Yeah. feel like Sanam is capable and so is Rubina. तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और एक और चीज है, मुझे लगता है कि रुबीना का परफॉर्मेंस डेफिनेटली नीति जिलर से बहुत बेहतर था। Yeah, दिस आई oh, हैव टू for sure. से यस। For तो Yeah. या sure. नीति को 9s मिले थे और इसको 8 मिले हैं. That's what I'm दैट्स व्हाट आई एम saying. मुझे ना सेइंग। या scoring में लफड़ा लगता है. Like how In can terms of Niti get emotions, I 9s do and feel Rubina that get Rubina's 8? performance was definitely better. In For terms of नहीं, me. कोऑर्डिनेशन emotions, भी, For that me. feeling, कोऑर्डिनेशन भी हैरिस, कोऑर्डिनेशन भी, coordination, लाइक be आई सेड। yeah, contemporary, या that coordination, it was definitely better. I found Niti's act cute. This act I found beautiful. So there's a bit of a Yes. difference. Yeah. Yes. या Okay, so the next one is Ali. Can I just say, मुझे Wow. इतनी खुशी हुई कि इस हफ्ते अली आया और दादी नहीं. एक तो forget his dance today. Can we talk about his journey really quick? फिर उसके dance के ऊपर बात करते हैं. जो इसने story सुनाई ना अपनी, क्योंकि हमने पता है कि दुनिया बहुत बकवास करती है, बहुत बोलती है, unnecessarily अपनी टिप्पणी देनी होती है उनको. I felt so sad for him because Ali doesn't just put clothes on. ये कोई get up करके दादी नहीं वो बनता. He's an amazing actor. So it's not just कि वो सिर्फ लड़की के रोल प्ले कर सकता है, लड़कों के नहीं. उसने खुद कहा कि हमारे इंडस्ट्री में like typecast हो जाता है इंसान कि अच्छा अब ये किया, अब दादी की, अच्छा अब ये करो, ये लड़की लड़की लड़की.
एंड ही सेड कि इवन दादी का रोल मैं करना नहीं चाहता था, 1 साल में घर पे रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो मैं करता हूँ. बट देन kids, forget adults, kids these days वो नहीं जीने देते, कि तेरी Yeah. 2 मम्मियां हैं, तेरा वो नहीं है, तेरा बाप नहीं है. Can you imagine for a daughter to hear that, for a son to hear that, and then for him when his son said कि आपको कुछ और नहीं करना आता, like that has to be so heartbreaking. And I love Yeah. कि आज उनके जो बेटा और बेटी थे वो आए एवी पे, उन्होंने कहा कि dad, we love you, keep doing what you do, we don't care what form you're in, we are proud of you. So that was so amazing to me. जहां तक उसका डांस है, मुझे अली का इस हफ्ते का डांस सबसे बेस्ट लगा in terms of his previous performances, क्योंकि यहाँ पे अली की स्टोरी दिखी हमें, अली का जो स्टाइल है वो दिखा, not दादी. And I think it's very unfortunate. I was shocked when Ali was eliminated, not Zorawar. मैं ये नहीं कह रही कि Zorawar deserve नहीं करता, पर मैं ये कह रही हूँ कि Ali ज्यादा deserve करता है to go on in Jhalak. अभी तो हमें अली की झलक दिखी, नहीं तो सिर्फ दादी की झलक Yeah. दिखी थी. एंड मुझे लग रहा था कि ओके, इस हफ्ते अली आया है, अब यहाँ से अली ही दिखेगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा. एंड आई एम रियली सैड फॉर दैट. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी हाउ मच the judges connected with the story, how much they loved him, है ना. एंड करण ने कहा भी कि अली, आई होप टू वर्क with you one day. So हम ये कहते हैं ना कि Karan brings people on that he appreciates and likes. So I'm really hoping for that. I really hope कि Ali gets what he wants in life. क्योंकि मुझे उसकी story बहुत feel हुई. And एक इंसान था जो मेरे जहन में आ रहा था when I was hearing this story from beginning to end. I don't know मुझे कहना चाहिए या ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ ओडी घूम रहा था, क्योंकि ओडी भी यहाँ अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए गेटअप्स करता है. वो अपनी रियल लाइफ में तो ऐसे घूमता नहीं है, सिर्फ फन के लिए करता है, लेकिन ओडी को भी बहुत सुनाया जाता है. तो मुझे इतना फील हुआ उस टाइम. आई वाज लाइक, आई थिंक आई एम लिविंग दिस थ्रू माय फ्रेंड. सो दैट्स व्हाई आई थिंक मे बी मैं अली के लिए बायस्ड हो रही हूँ या जो भी है, लेकिन मुझे उसका परफॉर्मेंस या उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा फील हुई. व्हाट डू यू गाइस थिंक? Kirti, definitely I agree. Especially like you just said, I also remembered Odie in that, and I do feel that the world can be harsh. And I know, not just as a friend, we know him as a person. We do know, like the stuff that he's gone through in his lives and stuff, and even with Ali, what he's gone through. So it did touch me, this whole moment. It did make me feel emotional as well, and that connect. Talking about Ali as Dadu, I loved it. He looked amazing. He looked like this cuddly teddy bear grandpa. It was so cute. Yes. I loved it. I loved there was a movement in there, when she literally jumps on his lap and he's got that perfect catch. It's in the photo as well. I love that. I think that was good. That Yes, was that was amazing. amazing moment. हाँ, Yeah, बिल्कुल. I was like a perfect catch as well. Like, wow, it was Yes, good. I yes. loved the grooviness that he had in the moves. Obviously, I wanted him to stay for sure. I think his Yes. journey was just short lived. I think he deserves better, yar, and he was good. I wanted to see more of Dadu Yeah. or just Ali himself. And I think obviously Dadi's factor was fun, but here Ali was himself, and you resonate with that, and I like that. I think it was just hard to see him go because now he Yeah. obviously upped his game. Or about chala gaya, and it's like who's gonna make us laugh? Kaun wo comedy karega? That entertainment factor. I felt that he would have had a better journey from now, but it's just unfair. I love his story, and I do feel that now his kids are proud of him. That moment is beautiful. The kids are proud of you. You've been through all this bakwas. People are talking shit about you. You don't Thanks for care. Ah, that, Pooja. I love you Oh, guys. thank you, Thank you for all Pooja. you do. We love you too, Pooja. You are one of our biggest cheerleaders, and we Pooja is my appreciate love. you so Yeah. much. Thank you so much. Pooja, Thanks, I love you. Pooja. Thank you. So yeah, I love the fact that he mentioned, and I still feel it takes him to talk about all this stuff. Ki mujh pe ye guzra. People used to literally verbally throw stones at me and say, you're a mother and a father and stuff. I couldn't Yeah, face that's just people, but I love yeah, the fact that his kids have supported him now. Obviously, through kids they went through a lot, but they've realized and they've supported him and they've stood for the truth and they've realized कि बाप तो कमा रहा था to feed you guys, to bring you up. And obviously what he's doing is art, is talent. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि he's dressed up, whatever he's doing is beautiful. And I like that. And I feel happy that they're proud of him. So I think it was amazing. I love the act. yeah. I definitely think he should have stayed.
And he deserved the 8. I think the scores were perfect. Ali ka jab performance aaya, to be very honest, I was like, finally, he is not in Dadi Roop, and Yes. finally he's doing the Dada Roop. I have seen Ali dancing before. I've mentioned कि जरा नच के दिखा, एक शो आया करता था जिसपे Ali was a captain and he was a good dancer. अली ने बहुत अच्छा डांस किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड फाइनली उसकी लिप्सा ने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी कर दी. Yes, वो Yeah, finally. लिप it was so या वो groovy. I love the entire, he was all heart. He was Hmm. wearing hearts and his Hmm. performance was all heart. Teddy I bear loved for it. short. या तो Yeah, और वो जो वो जो लीप ऑफ फेथ वाला ऊपर नजर आ रहा है कि वो Yeah. जंप करता है और उसको होल्ड कर लेता है. आई लव द एंटायर पोर्शन. बहुत खलंडरापन था, बहुत खुलापन था. आई Yes. लव्ड इट. अब मैं बात करूंगा करण जौहर की. जब करण जौहर ने उसको आके हग दिया था, दैट Yes, हग वाज सो इमोशनल. it आई फेल्ट was. सो लव्ड, यू नो क्योंकि yeah, वो जो एक आप फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से जो एक हग से हीलिंग करते हैं, Yep. वो कोई और दुनिया की चीज कर नहीं सकती. और करण को लेके मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई रिमेम्बर करण जौहर वाज द सेम कि जी जब मेरा व्हेन आई वाज अ किड, ठीक है, एंड Yeah. सेम वे आई हैव हर्ड द स्टोरी फ्रॉम हिम ऑन मेनी इंटरव्यूज के आई नेवर टोल्ड कि माय फादर इज अ प्रोड्यूसर बिकॉज की फिल्में लगती हैं, yeah, ओ ये मेरे बाप ने नहीं बनाई. आई विल से माय डैड इज अ बिजनेसमैन, वो तो ये करता नहीं है. क्योंकि बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं. Yeah. हम बात करते हैं बड़े ट्रोल से, बच्चे बहुत बड़े ट्रोल बन जाते हैं, Yeah. वो बुली करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो आई डोंट नो दिस इज ह्यूमन नेचर और व्हाट. और उसकी वजह से आप इतने इफेक्ट होते हैं दैट यू स्टार्ट डिसओनिंग योर ओन लव्ड वन, योर फैमिली मेंबर, लाइक करण यूज्ड टू डू विद यस जौहर जी. तो मुझे लगता है वो कनेक्टिविटी उसको डेफिनेटली हिट की होगी. और जब अली के बच्चों ने आके वीडियो बनाया चलाया, आई वाज लाइक, मैंने कीर्ति को उसको कॉल किया, मैंने कहा कीर्ति आई फेल्ट लाइक कल को मेरे बच्चे होंगे, दिल में लाइक Dada, what the fuck do you do? What is this? What is this get up? I was like, but thankfully that is not my job. कीर्ति के लिए कीर्ति हम लोग ये जो चैनल करते हैं, दिस इज नॉट आवर जॉब, दिस इज आवर लव. तो Yeah. वो प्यार है जो yeah. ऑडियंस से कनेक्ट Love. करने के लिए होता है, डेफिनेटली. एंड आई थिंक 2 days बैक जब हम लोग 2 दिन पहले लाइव करते, माय भांजी वाज देयर and I felt so loved कि चलो my family member is also watching because Yeah. and I was in full ताम झाम, बड़ी बड़ी आंखें बनाई and all that. I love the entire thing. और that is why I feel like ये जो अली की स्टोरी थी, वो फैमिली का वो फेसेट दिखाती है कि जितना क्रिटिसिज्म आपको बाहर से आ रहा हो, आपके Yeah. बच्चों के थ्रू आ रहा हो, दुनिया कर रही हो, and you are not aware of it, and then you feel like what do I do to make them proud? Yes. But then आपको क्या नाम है, being the bread winner of the family, you have to do what you have to do. Yeah. And Yeah, his children are so proud of him. दुनिया बदलती है, वक्त बदलता है, Yeah. पैसा that's what सब कुछ होता है, matters. ये तो मैं Yeah, But आगे. I also hope that people see him as Ali the actor. He's an Oh. yeah, actor. the He can play performer. any role, any role. So I hope that I wish we could see him more. I don't think ये eviction सही थी अगर मुझे पूछो. It Yeah, was the worst. It was the worst. Yeah. क्योंकि And yeah. I wish कि उसको अली बन के परफॉर्म करने का मौका ये देते. And not just दादी Yeah. दादी दादी. मुझे लगता है अगर अली बन के ये परफॉर्म करता तो ये शायद अभी भी होता शो में. Like that's how I feel. नहीं, आई Yeah. फील लाइक पता नहीं क्यों कीर्ति, इफ यू हैव नोटिस, सिराज अफरीदी मेरे जहन में आए थे, जब वो अली का एलिमिनेशन हुआ, बिकॉज 2 days बैक ही वाज 2 episodes बैक ही वाज लाइक हमेशा पहले कॉमेडियन निकलता है, हमें तो पता है. एंड आई एम लाइक डैम, ही हैज सम काली जबान. सिराज अफरीदी, तेरी जबान बहुत काली है मेरी जान, ठीक है. एंड आई Siraj, I फेल्ट hope रियली you're बैड watching this. क्योंकि आई फेल्ट लाइक जोरावर जो जब उनकी हम परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे सब करेंगे, लेकिन ही लुक्ड वेरी गुड. लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे ना, आई वाज लुकिंग एट जोरावर्स फेस He बिकॉज was ही वाज shocked. डैम श्योर, ही वाज लाइक कि मैं तो निकल रहा हूं. एंड ही वाज No, लाइक or Ali was so sad. Ali was so, he deserved this chance. This is what क्योंकि ये जो हमने एक्टर्स की जितनी जर्नी देखी, बीट निया, बीट क्या नाम है पारस, बी इट रुबीना, एंड बीट आगे शिल्पा भी. ओ माय गॉड, इन लोगों ने जो अपनी स्टोरी दिखाई, और अली का ये बोलना कि मैंने अपना घर चलाने में एक्टर हूं. और मैंने तो बहुत दफा ये बोला है, इंडस्ट्री की सबसे फेवरेट चाल है भीड़ चाल. Yeah. तो जब वो भेड़ चाल में पढ़ते हैं, अच्छा ये दादी बनता है, इसको दादी कराओ, इसको कॉमेडी कराओ, इसको 2-3 एक्शन लो,
वो स्टोरी बताना कि पुलिस वाले का Yeah. करेक्टर आया था, तो आई वाज लाइक मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मुझसे कराया ये जाता है। तो अगेन Yeah. आई लव्ड इट, लेकिन दैट्स द रियलिटी। लेकिन उसका Yeah. जाना, इट वाज छुरा ऑन माय दिल। मैंने कहा Yeah. ऐसी ऐसी क्या 100%. It was ऐसी hard. ऐसी क्या लोगों ने कनेक्टिविटी देखी है जोरावर में। आई लाइक, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, बट प्योरली ऑन प्योरली ऑन क्या नाम है, डांस परफॉर्मेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, Ali deserved more, and Yes. Zorawar needs to be Yes, 100%. 100%. Okay, let's no go to the grudges. next one. Kashmir, obviously Kashmir आता है तो हमें पता है अच्छी परफॉर्मेंस उससे मिलनी है, और यहाँ भी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये जो उसने अपने फाइटिंग स्पिरिट के बारे में दिखाया, जो उसके मॉम के पास है, उसके पास है, द हाउ मच वर्क दे हैव पुट इन टू मेक देयर लाइव्स व्हाट दे आर टुडे, वही उन्होंने डिपिक्ट किया था। इसमें इतना अग्रेशन था, इतना पावरफुल परफॉर्मेंस था ये। एक तो ये जो रोमशा है, शी कैरीड कश्मीर ऑन हर बैक, है ना, शी I टुक loved it. स्टेप्स I विद loved हिम। it. दैट Yeah. वाज अमेजिंग कि हेलो, सिर्फ लड़के नहीं लिफ्ट कर सकते, लड़कियां भी कर सकती हैं लिफ्ट लड़कों को। रुबीना ने भी यस, लिफ्ट किया रुबीना था ने उस भी मोमेंट किया पे। था। सो या आई Yeah. लव दैट, एंड मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मेरा फेवरेट जो सेक्शन इस डांस का था वाज विद द रेड चुन्नी, जब उसने वो चुन्नी निकाली और चुन्नी के साथ डांस किया, Yeah. दैट वाज माय फेवरेट। आई थिंक कश्मीर की जो पर्सनालिटी है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, एटीट्यूड है, स्टार क्वालिटी, ही हैज ऑल ऑफ दैट। ही ओन्स द स्टेज, जहां पे भी वो होता है स्टेज पे, ही ओन्स इट, ही कमांड्स अटेंशन। लेकिन अगर हम उसकी पिछले परफॉर्मेंसेस की बात करें, मुझे वो ज्यादा अच्छी लगी थी कंपेयर टू दिस वन। जो वेरी नोरा ट्रू। ने कहा था ना कि जो आपने खुद अपना बेंचमार्क सेट किया है, यू डिडंट मीट दैट। तो ये जो 9s उसको मिले थे फ्रॉम माधुरी, फ्रॉम करण, आई डिडंट एग्री। मुझे लगता है 8 उसके लिए अच्छा था। ही वाज गुड, ही वाजंट बैड, बट ही डिडंट मीट हिज ओन स्टैंडर्ड। जो पिछले 2 हफ्तों से उसने सेट किया था, यहाँ मीट नहीं हुआ। But it was still good. वो जो connection उसको अपनी मॉम के साथ जो था उसका, the mom how emotional she got कि हमारे पास जो भी है, it's कश्मीर के because of कश्मीर हमारा घर छीनने लगे थे, इसने पता नहीं क्या क्या किया, और अब हमारे पास घर है and all that. I connected to so much with it. I love that connection. लेकिन अगर हम purely dance की बात करें तो मुझे वो lacking लगा. There was something there that I didn't feel he got all the way. Does that make sense, Odie? Like he almost was there, but not all the way. आई एक्सप्लेन। हमने कश्मीर का इससे बेटर परफॉर्मेंस देख लिया, दैट इज द प्रॉब्लम। That's the problem. हमने जो कि वो जो एक ऊंफ फैक्टर होता है, एक सेक्सीनेस होता है, Yeah. ही डज हैव अ हीरो पर्सनालिटी। आई टोटली एग्री विद करण जौहर के, लगता है हीरो परफॉर्म करने लगा है, Yeah. हीरो की एंट्री हो रही है। रोमशा ने इस दफा जो इनका करवाया है, मुझे कंप्लेंट ही नहीं है, बट आई एम एक्साइटेड। आई वाजंट एक्साइटेड, आई वाज लाइक ओके बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, इट वाज वेरी वॉरियर लुकिंग एंड अच्छी स्टोरी टेलिंग है। लेकिन क्या मुझे गूज बम्स आए? मुझे गूज बम्स नहीं आए। नहीं आए। मुझे क्या इंप्रूवमेंट नजर आई? मैंने लाइक आई सेड, आई थिंक उसका बेटर परफॉर्मेंस मैंने देखा हुआ है। Yeah. सो दैट इज व्हाई वो 888 पे रहे हैं, प्रॉबेबली उसके ऊपर वो नहीं गए हैं। मे बी अगली दफा सरप्राइज पैकेज ज्यादा आ जाए, क्योंकि चाहे Yeah. वो पहला गाना था रोशनी से भरे भरे, दूसरा गाना बदन पे सितारे हो, गाने की चॉइस हो, कुछ हो, Yes. वो खुलापन हो, वो अबैंडन हो, वो खुल के नाचना हो, यहाँ पे आई डोंट नो वो सिंदबाद क्यों बने हुए थे वॉरियर के नाम पे, या वो अलादीन क्यों बने हुए थे। मतलब देयर वाज समथिंग ऑफ, No, इवन I इन thought द he was doing Bahubali thing. I thought वो Bahubali type बन रहा था. but to me he wasn't Bahubali, he was younger Bahubali with this Aladdin getup, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस था। मम्मी जी मैया यशोदा ट्यूं ट्यूं ट्यूं, अच्छा Teo, teo, teo. तो जो वो था, जो कश्मीर की परफॉर्मेंस को लेके आई वाज सेइंग इट वाज गुड, इट वाजंट बेटर, आई वांटेड समथिंग बेटर, क्योंकि मैंने शायद उससे अच्छे परफॉर्मेंस दूसरों के देखे, क्योंकि वो ग्रोथ नजर आती है, मुझे ग्रोथ नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, ग्रोथ नहीं वही, थी। there was no growth. He didn't meet the threshold जो उसने खुद ही set किया हुआ है. So there's nothing even stand out to talk about in the बट performance. that wasn't disappointing even, अच्छा था, Yeah, ये चीज है अच्छा कि था, अच्छा था। सही था, Yeah. अच्छा था, टिकाऊ था. That's how I felt about his performance and nothing more. Harris, you talked about it, right? No, I No, got he cut went off. out.
I went out. Yeah. So for me, I'm आपका gonna कट say गया था, एक सेकंड, आपका कट गया था, आई गॉट कट ऑफ. no. My connection got funny. It was going. Pum, 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 pum. I don't know what happened. बट रिकी लाइक्स इज स्लो, तो आज आपका कनेक्शन स्लो हो गया है. I think Ricky की नजर लग गई. Otherwise, I like it in full speed. जोर रिकी, आर लगा यू के. लिसनिंग? Okay, can we आयशा, talk about this Anyways, guy or yeah. I will move forward? I want to talk about the performance. So I want to give it one word. I would say Junoon. For me, Junoon, because I love the Junoon that he had in his act, that passion, those expressions. It was good. I do agree with you guys. It wasn't like, it didn't create a bigger standard than usual. It was maintained and I liked it. It wasn't very grand, but it was good for sure. पूरा I love गाऊंगी, it. पूरा गाऊंगी बात. I love the Sorry. story, the struggle that he goes through. His mother even says, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, and he had this dream. He told his father कि मुझे एक dancer बनना है and stuff, and there came a point where his dad couldn't give him money and stuff, so that struggle. So I resonated with that. I was like, damn, Wait, these things Harris, happen. Moody Foodie saying Gunjan is a trained dancer, उसको competition में होना नहीं चाहिए, फिर तो कश्मीर को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो तो dance teacher है, वो dance school Yeah, खोल के बैठा हुआ है, तो फिर हाँ, ये लेकिन exactly. तो कीर्ति, standard ही नहीं होना चाहिए. लेकिन कीर्ति उसने डांस स्कूल 15 साल में खोला था, एंड 15 साल में वो क्या डांस सीख के आया, क्योंकि वो उसने खुद खोला था, तो वो नहीं, स्टोरी तो वाज that's what Yeah. ग्रेट. I'm saying. तो why are we nitpicking? अगर ये तो celebrity show है, so isn't Gunjan at a disadvantage? Is she gonna be more लेकिन popular than Rubina? I don't think so. हाँ, लेकिन हमें एज ब्रैकेट का ख्याल रखना चाहिए. व्हाई आर वी लाइक डाइवर्सिटी के Exactly. नाम पे It has एज ब्रैकेट nothing का to do प्रॉब्लम. with dance. It has Yeah. everything to do with age. Also, या I disagree. Kashmir को 9 score नहीं मिलना चाहिए था. I think Yeah. 8 was good for him. I 8 like was what good, Nora yeah. said. सुची पांडा, आई डिडंट सी इंप्रूवमेंट, एंड दैट टू Yeah. ये समबडी रोड की उसको शर्टलेस आना चाहिए था, तो ओडी खुश होता. डेफिनेटली उसको शर्टलेस आना चाहिए था. मैं कहता हूँ पैंट लेस भी आ जाए, चड्डी में आके डांस करे, ही कैन डू इट एंड पुल इट ऑफ वेरी वेल. आई वुड लव इट. ही हैज ग्रेट लेग्स, आई नो. Yeah, so I do स्विमिंग feel करते हुए it देखा was था. stable. It wasn't great or grand, but it was stable. So it was good. I want to see more. I want to see more improvement for sure. But I think jitna bhi kiya, that junoon, that fierceness that he had, the love that he showed in the performance, that was good. That was nice for me to see. I love the jumping that he did. I want to say about Ramsha, I loved her look. She looked fierce, fiery, those expressions, those eyes, that Hmm. costume. That was wow for me. So I loved it. हाँ, But yeah, I don't think वो 9 उसको deserve करते. I think he was a bit away from that. But maybe next time. हाँ, तो let's talk about Amruta here. Amruta and Prateek did this Sufi inspired dance. I thought जो उन्होंने costumes डाले हुए थे, they were so beautiful. जब भी वो spin लेती थी, कैसे वो निखर के आती थी, like with the twirling, I just loved it. ये जो Sufi और Prateek का combination इन्होंने किया था, तुझ में रब Yeah. दिखता है, एक तो गाना इतना beautiful है. I love the ending. ये जो Ariel में जाती है, she's spinning, नीचे प्रतीक is spinning. I don't think इतने wow moments थे इस performance में, लेकिन सही था, beautiful, sweet था. I loved जब प्रतीक पीछे को जाता था, that screen that's there, he used to go in the back, and then the mom figure would appear, and she would be, doing the dance with the mom. लेकिन there was nothing like wow, amazing, part दिया, ऐसा कुछ नहीं था. It was beautiful. The costume was beautiful. Her emotions were beautiful. लेकिन अमृता ने खुद भी कहा था कि I wasn't all the way up to the mark क्योंकि my emotions got the better of me. I Yeah. think that's a great quality क्योंकि वो खुद ही admit कर रही है कि it could have been better. And I agree, it could have been better. मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने अच्छा नहीं किया. Just like with Gashmeer, I think it could have been better because we have seen better. So, with her scores, I think they gave her 9s and stuff. 9, 9, and Yeah, 8. but Karan gave her 8. I Yeah. agree with Karan here. It Yeah. was an 8. It wasn't a 9 for me. Lekin Prateek's choreography was beautiful. It was soothing to watch. Because Sufi style is soothing. जो spins होती हैं, जो वो, like रब को पुकारते हैं. I loved it. Like, I thought that was beautiful, but nothing wow. Aside from the end, the twirling they did. That was it. What do you Yeah. guys think? The Kirti, for me, when I saw the entrance, it reminded me of that moment when I was in Turkey because I went to watch a Sufi dance show. Oh, And I wow. love the way they do that spin and the twirl constantly for like 5 minutes. It gives you chakkar, but it takes you into a different world and it's beautiful. Yahan mujhe wo feeling dikhi nahi, and I wanted to have that feeling.
I do feel she was good. It was a great attempt. That contemporary with the Sufiana was nice. She had a bit Mm-hmm. of that Indian classical in there, so I like the mix of it. But she said it, and even Karan said, "Ke why do you feel bad? Ke your choreography is good." I do feel, but मुझे लगता है कि उसके चेहरे पे घबराहट थी. It wasn't all there. She was obviously there. She was performing for her mother, and I love the song "तुझ में रब दिखता है," and I do feel that that's a beautiful song to dedicate to your family. But I think it wasn't up to that mark. कि वो उसको 9 मिल जाए. However, good attempt. I love the costume. I love, the spin like you just mentioned on the aerial and he's spinning. I think it was great, but for me there was nothing like wow or any high moments. Um, Mm-hmm. I think she could do better because we've seen, she's got that musty in her eyes. She's got that Yes. attitude. She's got that swag. She could do more. She could do outstanding in different forms. But yahan pe, I think it was a new form for her. So I think she wasn't comfortable in it. I don't know what it was. Maybe the Yeah. pressure. But I think good attempt, but I don't think wow. Yeah, That's so all. Mr. Unknown is asking, but why Amrita was making tweets last week कि मेरा बेकार performance हुआ है? Because maybe she felt उसका बेकार Yeah. performance हुआ है. उसने तो performance के बाद ही कह दिया कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया. So that's how she genuinely felt, and I appreciate that. Like, I Yeah, love it's that. appreciating, Yeah, and based on her own opinions, I'm sure she'll exactly. do It's her something own better. opinion of what she did. So I love It's her that. own Only what opinion. do you She's think? motivated कि by it. तो वो खुल के अच्छा से नाचेगी next time. Yeah, That's how it is. exactly. कीर्ति दोबारा दिखाना है जरा अननोन का. अननोन एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता है, चाहे Yeah. Yes. वो 100% या 1000% दे दे. दैट इज द रीजन. नाउ कमिंग टू अमृता एंड Tina प्रतीक. said to get both. To get votes. टू बी It वेरी could ऑनेस्ट, be. लेकिन It सी, could be. या, बट क्या नाम है, आई थिंक शी विल डेफिनेटली गेट वोट्स. अब रहेगी बात अमृता की परफॉर्मेंस की. प्रतीक का सूफी वाला रूप मैंने पहले देखा हुआ है, और पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी. इवन दैट Yeah. टाइम जब वो कर रहे थे तब भी ही मिस्ड सम मार्क. तो उन्होंने जब वो जो जजेस थे, आई थिंक गीता वाज देयर प्रॉब्ली, एंड शी वाज सो राइट कि जब करना है तो 100% वो फॉर्म लेके आओ. क्योंकि प्रतीक बीच में कभी इधर जाते कभी उधर जाते, तो वो जो पूरा फ्लो होता है सूफीज्म का वो टूटता है. सूफी डांस की, जो टर्किश डांस की बात अच्छी क्या है, वो आपको विर्द में लेके जाता है. विर्द मीन्स Yes. Yeah. कि वो आपको ना एक ट्रांजिशन में लेता है. यू ट्रस्ट ट्रांसपोर्ट टू अनदर Into a वर्ल्ड. different new लाइक, world. Yeah. या, तो लाइक हैरिस वाज सेइंग कि वो थोड़ा साइकेडेलिक भी होता है. इफ आई थिंक हैरिस गेट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि टर्की के Because अंदर it's वो a इतना spiritual ज्यादा form, so it takes या you into वो, a different dunya. तो वो इतने बड़े मैसिव लेवल के ऊपर जब वो स्पिन करते हैं, स्पिन करते 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 वो तो एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग लेके आते हैं, एक लेयर लेके आते हैं. यहाँ पे Yeah. मेरा प्रॉब्लम ये था, प्रतीक का फॉर्म ज्यादा डेलिकेट लगा मुझे डेफिनेटली अमृता से. मुझे लगा प्रतीक अपने पे ध्यान ज्यादा देगी, अमृता पे ध्यान कम देके. सो एंड सो कि जो ये स्क्रीन वाला मोमेंट है उसमें भी मुझे कोऑर्डिनेशन नजर नहीं है. या तो आप इसको बिल्कुल अलग कर दें, बिल्कुल ना लेके आए, क्योंकि आप सूफीज्म लेके आ रहे हैं, ठीक है. और Yeah. आप फिर पूरे का पूरा फोर्स शॉटिंग करनी है तो उसके लिए स्क्रीन की जरूरत है. जब आपको कोऑर्डिनेशन का मसला आ सकता है, आप उसकी मदर का पीछे वीटी दिखाते रहे, कुछ भी कर सकते थे, देयर वाज समथिंग. लेकिन क्योंकि बार बार सूफी से कट करके आप थोड़ा क्लासिकल टच लेके आ रहे हैं, वो मिक्सचर था, वो फ्यूजन था. और अच्छी बात यह है कि अमृता का इंडियन फॉर्म है हर फोटे. लेकिन डेफिनेटली मेरे नजदीक ये 9 वाली परफॉर्मेंस तो नहीं थी, बिकॉज अगेन अमृता इससे अच्छा कर सकती थी अगर वो Yeah. एक्सेप्ट भी करिए कि हाँ मुझसे थोड़ा फॉल्टर हुआ है. अब यहाँ डिफरेंस है, जब निया शर्मा ने टुवर्ड्स एंड एरियल लेके गई, वो क्रिसेंडो इतना बड़ा था कि आपको गूज बम्स आते हैं, आप अपनी सीट से खड़े होते हैं और आपको एक इमोशनल जर्नी जाती है. यहाँ पे प्रतीक नीचे अलग कर रहे हैं, वो ऊपर अलग जा रही है, और वो भी फुल फ्लेजेड नहीं था. तो वो जो एरियल गई एंडिंग करने के लिए, इट कुड हैव बीन समथिंग You know एल्स, what I समथिंग. think? Yeah. I like the ending. ये जो उन्होंने ऊपर नीचे किया. You know, निया का ये था ना, the whole performance was building, 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 and then the end portion got hyper, है ना? यहाँ पे क्रिसेंडो. एक ऐसा 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 जा रहा है, ऊपर थोड़ा अच्छा, and that's it. ये ऐसे था. Where emotions were not awoken. Like I said, Sufi जो style है, it's so mesmerizing, so beautiful to watch. You know, Yeah. so peaceful. And that's all you feel, which is fine. इसमें कोई wow वो नहीं होना था, which is okay. लेकिन it still didn't touch you the way it should have.
right? Yeah, Like, exactly. I Yeah. know she loves her mom and she did this for her mom कि मुझ में अपनी mom में भगवान दिखता है, fine, fair enough, great. लेकिन जो फील होना चाहिए था कि हमें भी दिखाओ कि कैसे वो भगवान लगती है, you know, like वो feeling Yeah. कहाँ है? And There I was Okay. no think in feeling. Sufi you're supposed to show that feeling. I think Pratik was in a zone. Amruta was very conscious the whole time, in my opinion. Yeah, You know, 100%. एक और बात बताऊं. The thing is, जब आप सूफीज्म की बात करते हैं ना, वो कंसेप्ट ऑफ गॉड है स्पिरिचुअलिटी का, कि हाउ Yeah. डू Yeah, यू एक्सपीरियंस spiritual. गॉड. तुझ में रब दिखता है, वो एक्सपीरियंस की बात है, वो स्पिरिचुअलिटी की बात है. पीपल सी ना, डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड. लोग कहते हैं हाँ जी मेरा फेथ है. फेथ से ज्यादा आई बिलीव इन कि मुझे एक्सपीरियंस करना है गॉड को. Experience, और गॉड, spirituality. Yeah. या तो गॉडलीनेस जो है वो वही है कि मेरे सामने कीर्ति बैठी है, शी इज द एविडेंस ऑफ गॉड एग्जिस्टेंस, पीपल आर वाचिंग, दिस इज द, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो Yeah. ये चीज, वो कनेक्टिविटी लेके ना, वो मिस कर गई अमृता व्हेन शी सेड कि मेरे इमोशंस ऊपर आगे. मुझे तो वो इमोशन नजर नहीं आया जो मैं Yeah, कनेक्टिविटी मुझे चाह भी रहा था. नहीं आए. नहीं नहीं. I wasn't feeling connected to it, and I think she could have done much better. वो I जरा पिछला दिखाना, पिछला दिखाना. मेरा मेरा पोज रह गया. अंशुल जी, बड़े बड़े सालों का नाम लेते हुए ना कानों का. Pooja says 100% it's like a trance. Yes, it It is. is. It is. Wahi to. That's what makes it so beautiful. Okay, the next performance is Dheeraj. Oh God. Oh God. Oh Oh God. God. Wow. इसके ऊपर What do we क्या ही say? कहें, guys? I just want to say, I guess compared to the last couple of weeks, ये मुझे फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगा because emotional मुझे नहीं content. लगा. लेकिन मुझे it नहीं was मुझे लगा. जरा it भी नहीं was लगा. I'm sorry to it say was this. not worth it. It was not good. मुझे नहीं लगता कि धीरज is giving his 100% in this show. मुझे ये नहीं लगता कि ये choreographer स्नेहा भी 100% दे रही है. I Exactly. think simple, sweet choreography. इनके बीच में कोई connection नहीं है. I didn't feel anything. ये जो इतना कहता है ना कि it was love at first sight with my wife. She was my first heroine. 13 साल हो गए हैं. अब बच्चा है. You couldn't feel any of that. Why isn't that emotion there? And ये जो choreography थी बहुत ठंडी थी यार. And Dheeraj, I thought people were saying, याद है जब ये contestants की list आई थी and people are like Dheeraj ने फाड़ देना है. Dheeraj is so amazing. कहाँ का amazing? कुछ नहीं इसका दिख रहा मुझे. I mean performance wise. And I don't know, like connect नहीं हो रहा. Like he is not giving his 100%. अली से पहले तो इसको आउट हो जाना चाहिए था फिर तो. अगर हम Exactly. अगर हम Exactly. इम्प्रूवमेंट की बात करें, अगर हम 100 like जो क्या कहते हैं उसको प्रेपरेशन की बात करें, I feel like Ali was giving more than Dheeraj. Dheeraj is coasting. Maybe he knows कि मैं इतना पॉपुलर फेस हूँ कि लोग मुझे वोट करते रहेंगे. Maybe that's what's happening. क्योंकि Paras was even worse than him. And then this week Paras का ग्राफ कैसे ऊपर गया ऐसे. So I feel like what is Dheeraj doing? He is like in the middle and almost below. He got 6s and 7s. So he needs to buck up because he is not doing good at all. And I think, you know, बार बार commercials आ रही हैं, उसका एक कोई show आने वाला है. अगर उस पे concentrate कर लो फिर तो, अगर इस पे नहीं करना, because कहीं पे तो Yeah. ध्यान लगाए. Like, so I don't know. I don't know. Maybe I'm being harsh. I just did not like this performance at all. I felt nothing. Nothing. What do you guys think? Yeah, so definitely feeling nahi thi, and I do feel ke Dheeraj ek prop ban ke reh gaya hai. You know, like that's what it felt like for me, that his choreographers using him as a prop, and then she's like, you know, chai or looking like a celebrity more than him. So I don't understand that. There's no coordination, there's no Yeah. feeling, there's no chemistry. Kya hai yaar? Like, come on, improve. It's just going down and down and down. I don't think even 7 was the mark that they should have got. 7 भी बहुत ज़्यादा मुझे Yeah, लगता है बहुत high with था his 7. performance. बहुत high Definitely था 6 or 7. 5 Shahrukh for Khan. sure. There was no chemistry, there was no feeling. If you're trying to show कि I love my wife, whatever, like इतना ठंडा performance, कि आप यार इतना ठंडे तेरे ठंडा लिए. परफॉर्मेंस पता क्यों था. I know he was injured as well. I'm not saying कि Yeah. like he's not injured. I know. लेकिन फिर भी we have seen shows where the contestant has been injured and the choreography has used that. यहाँ Yeah, पे I exactly. And 100% that agree they with Movie outshine in that. Foodie. The choreography is not good. The choreographer is not making him even dance. Forget this week. पिछले 2 हफ्ते से वो क्या कर रहा है? He's not dancing. He's just Yeah. moving बाजा बजा रहा around. है, बाजा बजा रहा बाजा है. बजा रहे, Yeah. प्रॉप बन के रह गया, बर्तन बन के रह गया,
एंड वो Yeah. किचन है, जो किचन ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, एंड वो सिर्फ साइड पे एक प्लेट पड़ी हुई है. That's how it felt like to me. So I was disappointed hardcore more than last time. OD. इतनी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी. एक तो गाना मेरा फेवरेट है, अजय अतुल का वो Yeah. गाना, ठीक है कि Yes. मेरे नाम तू, दैट जीरोस फिल्म सॉन्ग, उसका क्रेसेंडो इतना बड़ा है, वो इमोशन लेके जाता है. मैंने जीरो सिनेमा के अंदर देखी थी और मेरा फ्रेंड मेरे साथ था, कहता है गाने ऐसे भी होते हैं, क्या गाना था. और जब मैंने इसको देखा शाहरुख खान के गाने पे, मतलब यही करने के लिए आए हो भाई, तुम्हारा डांस ये था. Yeah. एनएमए का जगह होगी, परफॉर्मेंस खत्म हो गया. और वो क्या कर रही है, उसका भी एक ही काम है स्नेहा का, उसके आगे आएगी, खत्म, ऐसे हाँ. कहानी खत्म. Yeah. मतलब कुछ था ही नहीं परफॉर्मेंस में. मुझे लगता है जजेस की हिम्मत है, व्यूअर्स की हिम्मत है, रिव्यूअर्स की हिम्मत है कि औकात से बढ़ के रिव्यू करने पे आ बैठ गए. इतनी हमारी औकात नहीं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को जज करें. टू बी वेरी ऑनेस्ट, धीरज दोपहर का जब प्रोमो आया, आई वाज लाइक के क्या बंदा है, खूबसूरत आदमी है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, हीरो लगता है. लेकिन इतनी घटिया परफॉर्मेंस थी, सॉरी फॉर द बहुत लैक ज्यादा. लैक It ऑफ was too ना, kharab. लैक ऑफ जितनी बेटर घटिया वर्ड. ये परफॉर्मेंस थी, उतनी ही अमेजिंग या दिल को छूने वाली ये नेक्स्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी है, वो है हमारी शिल्पा. आई डोंट केयर, लोग मुझे अभी से बायस बायस लिख लो, आई डू नॉट केयर. मेरे लिए ये शिल्पा का बेस्ट परफॉर्मेंस था. इसकी जो स्टोरी थी इतनी टचिंग थी. आई कनेक्टेड सो मच विद दिस स्टोरी because she basically is saying that everyone here is talking about how amazing family is, how much, you know, they have a close family, this, that. What about us who don't have that family or that support? जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं. जब कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले वही बात करते हैं. And then she even said कि my mom said कि मेरी वजह से तू बिग बॉस जीती थी. And वो कहती हाँ, क्योंकि ये सब मैंने आपके घर में ही सीखा है, like family के बीच में. That was so insane. Shilpa was looking so beautiful in this performance. इतनी beautiful मुझे शिल्पा इससे पहले लगी नहीं. She's a beautiful lady. But in this performance, जो उसने feel किया and मन पर आया. और एक तो गाना ही इतना emotional गाना है, और उस पे ये जो शिल्पा ने perform किया, जो enact किया. I love the contemporary on her. Yes, she doesn't have that finesse yet. Yes, uski finishing mein problem hai. But jo emotion leke आई, at least when you compare to last 2 weeks, this performance was outstanding for Shilpa. Like, I believe I loved Shilpa's performance. I loved her story. That sadness, you know, the hurt she has, the resentment she has. Now this is why we finally figure out why she made a house so far away from Mumbai. She एग्जैक्टली left एग्जैक्टली. everyone and everything, and she's in her own world. मुझे शिल्पा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि you know what, I have felt the same in a lot of respects. You know, कि when I do something good, इतना होता नहीं. If I say something wrong or do something bad, then ungli, you know. So I understand where Shilpa was coming from as a person. I love this growth she has shown. Choreography for the first time Shilpa की performance में मुझे अच्छी लगी. So I hope Nishchil keeps this performance, this choreography level up, and it gets better and better. And ये जो confidence Shilpa को मिला होगा with this praise that she got, I think they can only help her. And I'm very happy for Shilpa. Like, I'm very happy for her. What do you guys think? So when I saw this act, it actually got me really emotional. Yes, It touched me, and I think I said this to you Kirti, before. yes, This was one of the acts that I totally resonate to because I've had yes. a lot of experiences like her. Basically, yeah. Sorry, before I get emotional. Oh my God. Okay. Oh, Okay, Odie, Odie, you I think you go. should carry on. I'll speak Odie, about it in go. a sec. अच्छा, शिल्पा की परफॉर्मेंस को लेके खुल के बोलूंगा, आई लव्ड इट. निश्चल Yes, डिड अ ग्रेट जॉब. दिस इज व्हाट, यू नो, जब आप बात करते हैं कंटेम्प्रेरी में, आप ब्रीथ करते इमोशन. शी वाज ब्रीदिंग एवरी इमोशन. शी yes, वाज गिविंग एवरीथिंग थ्रू हर परफॉर्मेंस. लेक्चरबाजी नहीं है, पीछे डायलॉग चल रहा है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नाटक नहीं है. एंड कुडोस टू निश्चल, जहां पे यू नो वो बहन बनता है, भाई बनता है, बाप बनता है, माँ बनता है, सब बनता है. He became everything, every relation that she has. और जब yes. वो मन भरिया गाना शुरू हुआ, Oof. yes I understand कि अभी भी, you know, उसके
टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डांस में, लेकिन द परफॉर्मेंस वाज सो गुड, सच अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, सच ब्यूटी। एंड मतलब शिल्पा को देख के ना मुझे जितनी खुशी हो रही थी उतना दुख हो रहा था। आई वाज लाइक शी इज अ बीटिंग हार्ट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ माई। एक दिल कैसे Yes. धड़कता है, ठीक है, Yes. जिसके अंदर खून है, वो खून दिखा रही है अपना। और ये एक रियलिटी है इस दुनिया की। आप इसको पागल बोले, वो कहती है जी मुझे पागल बोलते हैं जब, कि ये तो Yeah. पागल है। और Yeah. वो अपनी फैमिली की बात करती है। Yeah. क्यों? क्योंकि जो लड़की जब आपके लिए सक्सेस ला रही है, उसका नाम हो रहा है, तब तक आप उसको एक्सेप्टेंस लेके आते हो, और ये रियलिटी है। मैं आज गाइस का डिलेमा दूर करता हूँ, पता नहीं लोग कितने इस बात को कनेक्ट करेंगे। जिस घर में दो बेटे हैं ना, कमाने वाले की इज्जत है, दूसरे की इज्जत नहीं होती है, ये Yeah. भी एक फैक्ट है। Mm-hmm. एक घर में अगर एक बेटी है, दो तीन बेटी है, एक बेटी कमाने वाली, दूसरी कमाने वाली नहीं है, तो इसको अच्छा नाश्ता दो, इसको पहला करो, ये होता है, वी हैव सीन इट। तो Yeah. जब तक आप कमा रहे हैं, Oh कमाऊ my God, पूत है। ओडी उसने कहा था कि हम अब चूज नहीं कर सकते कि कौन हमारा फेवरेट है, क्योंकि माँ बाप एक ही होता है, लेकिन माँ बाप चूज कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा उनका फेवरेट है। एग्जैक्टली है। I तो connected to that line so much. I was literally bawling. या Yeah, तो yeah, जब यहाँ पे शिल्पा का फैमिली वर्सेस फाइनेंस, ये स्ट्रगल दिखाना, आई yeah, लव्ड इट। yeah, द डांस वाज ऑन पॉइंट, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली थी, और इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि शी वाजंट परफेक्ट डेफिनेटली, yeah, लेकिन इतने दिल से परफॉर्म करना उस गट्स के साथ, फैमिली का ये एंगल लेके आना, इट्स नॉट इजी। yeah, अपनी रियलिटी दिखाना। और अब मैंने लाइक आई सेड ना, जब पहली वीडियो आई थी, लाइक कीर्ति मेंशन, कि जब वो दूसरे घर जाती है, अपना घर खुद बनाती है, अपने हाथों से बनाती है, तो दिल मेरा उसको भी yes, बड़ा खुश होता है, वो सो इमोशनल। और यहाँ yes. देख के तो आई कुडंट स्टॉप क्राइंग कि यार व्हाट इज दिस वुमन, कॉल हर नौटंकी, कॉल हर पागल, कॉल हर एनीथिंग, बट शी इज सो जेन्युइन, दिस इज व्हाट शी इज, एंड आई लव हर। या DK says there are many such families, super toxic, speaking from my own experience. 100% एग्जैक्टली, ऐसे आई होते ऑल्सो हैं, बिलीव इट। and I'm glad, and शिल्पा ने ये कहा भी कि ये मेरी सच्चाई है और ये मैंने दिखाना था, क्योंकि not all families are, roses and chocolates हंकी and डोरी, hearts या and kisses. There's a lot of families that have a lot of drama and toxicity in it. And Ricky, you're triggered. I was triggered when I was listening to her story. I was triggered when I saw her performance. बिकॉज अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी सुन के लगता है कि जो अप्स होते हैं इट्स ओनली व्हेन शी डज समथिंग लाइक पैसा या अवार्ड या ऐसा कुछ होता है, व्हेन शी नीड्स देम एट अ पर्सनल लेवल तब होता नहीं है। सो आई वाज रियली ट्रिगर्ड बाय दिस, एंड लाइक वी सेड फिनिशिंग नहीं है उसमें, शी डजंट हैव दैट परफेक्शन, लेकिन इट वाज ऑल हार्ट, शी स्टिल हार्ट, शोड दैट क्या कहते हैं उसको, दिल improvement. था, She still showed या that heart. And I just loved her as a performer. क्योंकि वो फील करती है, मुझे लगता है जो बंदा या बंदी परफॉर्मेंस में फील करता है ना, that automatically makes the performance look better. That's just how I feel. um Akbar is saying Kirti Shilpa is not a good dancer, but she's beautiful and वेरी जेन्युइन, honest person. वेरी जेन्युइन। Yeah, she is very genuine. That's why in Big Boss, I wanted her to win the whole time. आई जब I बिग was बॉस में वो Team आई थी, Shilpa all the या way. Yeah. शिल्पा और अर्शी की जो दोस्ती थी, मेरा फ्रेंड और हम लोग, हम शिल्पा अर्शी बने रहते थे, मैं शिल्पा हूँ, वो अर्शी है। Yeah. लेकिन Odi, ऑनेस्टली तो this comment, ये हमारे पे होता है apply, है ना? She said since she is strong, they don't pacify her because वो handle कर लेगी. You या guys don't know how many times I have said this line in my life. How many या times? Because people think because you're strong, you don't need that cajoling. You don't need that, support, because you are so much supporting other people all the time. So this is why I really connected to Shilpa. I think कि at some point in our life we have all been Shilpa, you know. So तभी वो at a human level we are connected like that. That's great, माशाल्लाह, Raj. माशाल्लाह। हैरिस, Really. तुम रोती भी हो, तुम रोती हो? Yeah, I actually connected to the performance, so yeah, but I loved it. I तो think it was great. I do want to say that I do feel थोड़ी choreography and dance ज़्यादा हो सकता था. I do definitely feel that for sure, but I think it was definitely one of her best performance. I love the aggression that she had, the pushes that she was doing, Yeah. the And moment this one where she goes like this where she does and this. Yeah, I love oh, I that. loved I it. think it was amazing. Her She had eyes. that. Her eyes spoke it all. Yeah, 100%. Yeah. Like आई लव हर फेस, Yeah. her face is ब्यूटी। beautiful. Like how Madhuri dances with her eyes. You be like.
aankhon se, like it was beautiful. I love that. I love the storytelling. You know, the bhai even says ke meri behan, you know, meri itni achhi hai. Then he goes ke meri bua jaisi lagti hai. So I was like, this actually happens. People go through that shit. So I love the storytelling. I loved everything about it. Yeah, I do feel कि dance ज़्यादा ज़रूरत है, but it was her best till date. And I और think from वैरायटी here, रखी है उसने, उसने वैरायटी रखी है। पहले variety रखी है उसने. Yeah. बॉलीवुड Definitely किया, variety. फिर कैबरे किया, दिस टाइम Yeah, at कंटेम्पररी least शी it's इज डूइंग something फाइन। different each It's week. I something love that. different and she's improving, Yeah. so it shows that she will grow further up and she'll have a good journey. Yeah. Yeah, so this next story performance totally opposite of Shilpa. यहाँ पे हमें दिखा ये जो गुंजन का कनेक्शन है उसके डैड के साथ, गलती गलती That से was मिस्टेक, cute. ये जो गाना है, एक तो इतना फन पेपी गाना है, एंड गुंजन, I think I have seen Gunjan perform on this song before, or Tejas, या I think मैंने देखा हुआ है. But कुंजन ने किया था। Gunjan is so cute. ये तेजस एंड गुंजन की जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छी थी. ये जो तेजस उसका डैड बना हुआ था, जो बीच में उसकी मॉम आती है कि हाय गंद, फिर कर दिया, घर घर गंदा कर दिया, ये वो, एंड देन द डैड कम्स एट द एंड. I think cute story, but once again no wow factor. I'm not saying dance wise तो इनसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता इस शो में, लेकिन एज अ परफॉर्मेंस, एज अ इमोशन मुझे कनेक्ट नहीं हुआ इतना. तो ये है, लेकिन गुंजन इज सो क्यूट यार, एंड Yeah. I loved her dad. जो dad आके उसका नाचा है, and then the 540 the dad did, that was really cute. That was cute That for was me. good. But she wasn't the highlight of this episode for me. Although she is the best dancer. What do you guys think? 100%. She's definitely the best dancer, but there was no highlight because most of the stuff that she does, हमने देखा हुआ है, so it is repetitive. I love the, you know, the chati ke baal that they show on her partner, and she's obviously showing about her dad. I think that was funny. Mm, I love the transition and where she's doing that hip hop, you know, when she wears that hat and she does that solo performance. Obviously, we've seen it before, but I like that transition. I think it's pretty cool. That was good for me. The cutest part was, you know, when her dad comes in the end and he puts the chadar over her and she's falling asleep on his lap. So I found that really cute, but nothing wow for me. Choreography was amazingly performed. It was fun. That cute baap beti ki masti. It was good. But Gunjan is so fab, like she's amazing. I want to see more and more, something different. I know her forte is hip hop and you know that sort of move, but like I said, I want to see different. I want to see like, I know she's a child, but I want to see like Sufiana or Bollywood Masti or something different. A slow beat song. I want to see her perform to a slow beat. So it's a different challenge for her. Can she go through that challenge and do something different? मुझे वो चीज़ देखनी है because I know she's so amazing. She'll nail it at that. But I want to see that different side. But I don't think it was wow, wow, wow. yeah, exactly. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भूल चुका था कि गुंजन इस शो पे है। दैट इज माई प्रॉब्लम, क्योंकि वो बच्ची है, मुझे भूल जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस आने वाली है। Yeah. जब वो आई डेफिनेटली देखनी पड़ी, क्योंकि समटाइम लगता है चलो स्किप करो, गुंजन ही है ना, अच्छा करती होगी। लेकिन जब मैंने देखा, आई लव व्हाट वाज शी पुटिंग ऑन, दैट पीजेस वर ब्यूटीफुल, Yeah, आई that लव was दैट ड्रेस, Yeah, cute. that was दैट वाज cute. सो क्यूट। ठीक है, कोई तामझाम नहीं है, बस खुले में है। एक मुझे वो अच्छा लगा, बट टू मी इट वाज वेरी फॉरगेटेबल। Yeah, इट the वाजंट performance was very the forgettable. performance, yeah, the performance was very forgettable, very much skippable, कि आप skip कर सकते हैं, forget कर सकते हैं, wasn't highlight. Last time Aplam Chaplam was far superior. Mm-hmm. This time again, like Kashmir, she was tailed. Yeah. लेकिन क्योंकि कश्मीर है तो आपको देखना पड़ रहा होता है, यहाँ पे क्योंकि वो बच्ची है, यही प्रॉब्लम है जो हम बात करते हैं। ठीक है, Like karo guys, over 1100 people watching us and not Yeah, even don't 200 be likes. conjuice and like. Seriously, कंजूस मक्खी तू. मैंने मैं मैंने बॉयकॉट मुझे अब लगता है ये अपनी उस ड्राइव बंदे स्टार्ट की करनी है। वजह से जो कला के बोलते हैं मैंने 120 दफा लाइक लाइक किया है, वो कितनी बार वो डिसलाइक कर जीके चुका है, है. वो जीके है, कुमार, गौरव कुमार साहब है जो बोल गौरव Okay, रहे थे। so कुमार. let's forget Gunjan for a second. Let's go to this. अच्छा, एक तो I don't पीटी understand कि first पीटी week Kirti, में. before we move to wild card, can we discuss about week's सही है coin जिसको मिलता है नीति No, and forget आकाश. that नो crap. हैरिस, Okay, वी हैव टू एंड so इट, या ये जो wild card था, why after 1 week wild card entry होती है? एक Yeah. बंदा गया तो एक बंदा आ भी गया. I don't understand. At a personal story level, I think her name is Duti Chand. She या has
An amazing story. Talk about the success. This athlete, the medals, gold, silver, every level पे उसने दिखाया है. She said, जब माधुरी या किसी ने कहा कि यहाँ पे इतने competitors हैं, डर लगता है, वो कहती मैंने इतने लोगों से compete किया है, मुझे किसी से डर नहीं लगता. I love that. एक तो Yeah, धाकड़ song amazing है, लेकिन ये क्लिशे बन गया है. जब भी बहुत कोई क्लीशेड है. athlete आती है dance करने के लिए तो धाकड़ बजता है, right? So this we have seen a lot, a lot, a lot. Obviously, वो dancer नहीं है, but guys, you know the ठुमके she did? That was really cute. I thought the yeah, ठुमके were cute. And I love कि वो कहती मैंने life में कभी dance नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं नजर कर आ रही रहा हूँ. था. वो दिख रहा है. But I just love the story. I think she should be celebrated. She has made India proud. यहाँ पे कितनी देर टिकेगी? I 100%. don't know. I don't understand कि wild card entry क्यों हुई है. I don't understand at all, especially now. 2-3 हफ्ते ठहर जाते, that would have made more sense. लेकिन आ गई है तो आ गई है. Let's see what she does later on. And it's very interesting that she has a female choreographer, not a male choreographer. So that's very interesting to see. What do you guys think about her? So about, I don't know how to pronounce her name, Duti, right? Yes. Yeah, so Duti ji, I definitely want to say she's made India proud. I am proud of her. I was like, wow, she's come, she's got this, even though she's not a very good dancer or she's not a non-dancer, but the way she says कि मुझे मजा आ रहा है perform करके, that was nice. She's got this energy and this maza in her. I like that about her. I definitely Mhm. want to see if she's going to last longer in the show, how her journey is going to be, because I do feel where there's a lot of people with like good fan bases. I know she's got her own fan base, but obviously एक celebrity की एक different fan base है. She's got her own audience. So I want to Mm. see if she can overcome that and do something different in the show and last longer. So I want to do that because she's done India proud. I want to see her go further in life, and I feel like happy to see her. So that's Oh my good. God. I love this comment by Pooja. I 100% agree. Oh God, why on earth would they bring her as a wild card? She's done a lot on her merit, but why Jhalak? She should have been brought to Khatro ke Khiladi. 100%. I Yeah. believe so. 100%. If she's a sports person, Khatron is definitely a good show for her, for Yeah. sure. But yeah, she's come here, so I hope for the best for her. But in terms of like, because I don't know her, I'm proud that she's an achiever, but I Wait, don't think there's is this nothing true? exciting as of yet. Is this true? That's amazing then. I had no idea. Oh, wow. Wow. I love She is that. she is the one who declared it. Yeah. Yes, I love that. पिछले साल Dancing with the Stars में जोजो सिवा आई थी, American जो show है, she danced with a female choreographer too, and that was the first time a same-sex pairing happened on that show. I am really happy कि this is the reason. I love that. Yeah. Amazing, amazing. Yeah, She's representation definitely she's matters. she's definitely gutsy. Like she's obviously Yes, open I about things and love stuff, that. and she's got that Amazing. acceptance. Okay. So she's definitely got a journey, which is good to see. I Yeah. am really happy with that. That is great representation. She is showing that she can come on here and in front of the world dance with like a girl partner. I love it. I am Yeah. super happy for her. Yeah. Odie, ओके. go. मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर दूती चंद को अभी ले आए एज ए वाइल्ड कार्ड इतनी जल्दी लेके आए, कोई मुझे इशू नहीं है. जब शेफ हो सकते हैं तो डेफिनेटली ऑन डाइवर्सिटी लेवल. मैं अगर उसकी ओरिएंटेशन को छोड़ दूं, क्योंकि वो एक क्या नाम है, एथलीट है, फेमस है. मैंने जितने झलक देखे, मुझे भाईचुंग भाटिया बड़े पसंद आए थे, जो विनर भी रहे हैं. तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग अप टू हर. शी वाज टू स्टिफ फॉर मी. व्हेनेवर आप एक सपना देखते हैं, मेरा ख्वाब है कभी मुझे जिंदगी में बिग बॉस जाने का मौका मिलता है, तो आई वुड बी लाइक मेरी एंट्री पे ना ऐसी धाकड़ गाना लगना चाहिए. Exactly. आई विल आई विल एंटर Exactly. आई विल एंटर ऑन बिग बॉस स्टेज विद सलमान खान. ऐसी धाकड़ है, ठीक है. या ड्रामा क्वीन, वो क्या है, अदाया बड़ी फंकी, उस पे मैं डांस कर दूं. ये मेरे दो फेवरेट गाने हैं. तो जब वो गाना लगता है, एक तो बड़ा क्लीशे हो चुका है, Yeah. दूसरा एक तो वो जो उन्होंने फ्रेम रखा हुआ था, प्लीज, वो जो पूरा सेटअप था, दैट प्रॉप, उसका So कोई why put इस्तेमाल नहीं it था. in वो there? या Yeah. वो क्यों था मुझे नहीं समझ आया. आप एथलीट हैं, आपको डांस नहीं आता, बट कोरियोग्राफर के ऊपर बड़ा भी प्रेशर है कि पीटी ना कराएं हर हफ्ते उससे. डजंट मैटर यू आर लेस्बियन, यू आर स्ट्रेट, व्हाटएवर, बट व्हेन यू आर इन द डांस अरीना, डांस लाइक अ प्रो, व्हिच आई रियली वांट, क्योंकि आपके आने पे हमने अली को खोया है. सो आई वुड रियली Yeah. अप्रिशिएट कि अगर वो उसकी कोरियोग्राफर इस चीज पे ध्यान दे. या ओनली Yes. दैट. Okay, the last person left is Zorawar.
No, this is not Zorawar. ये कौन है? Faisu Faisu. है. अच्छा. Oh my God, we still have Faisu to talk about. अच्छा. Yeah. Can we just say Faisu की भी performance, like I said, मुझे Faisu खुद भूल गया, so that means कि मुझे इसकी performance भी ऐसी लगी है, guys. I don't think No, he I was that loved it. I amazing. think it I was loved it. Bollywood good. style उसने किया first class song पे. The first class song is fun. They had a really fun lift. Okay, energy थी. He was more comfortable on the dance floor. Lekin that's it. मुझे नहीं लगता कि इस परफॉर्मेंस में कुछ इतना वाव था. इससे अच्छा वाव तो वो था जब माधुरी आके मखना पे डांस करती है इसके साथ. That was I love cute. that Yeah. song. I love माधुरी. तो मुझे यही हाईलाइट लगी फैसू की. He was okay. He was better than Dheeraj. Better than Dheeraj for sure. He's better than his previous performances. Lekin that's it. The fact that I forgot कि हमने फैसू के ऊपर बात ही नहीं की. Like seriously? Wow. You guys, do you have anything you want to say? I think for me it was a cute performance. I love the first class hair, steps. I think that Yeah. was good. He did a good job. Definitely better improvement than the last time. So I think he definitely deserved the marks. 8, I'm not sure if it's too high, but I do think it was a good attempt. The grooviness in there, that musty. He looked like a hero. The costume, the Punjabi looked great. So I loved it. That's what I'm gonna say. Good Yeah. job. I love फैसल परफॉर्मेंस. मुझे ये परफॉर्मेंस चाहिए होती है. ठीक है, ये वो जो खुलंडरा परफॉर्मेंस होती है, फैसल ने अभी तक परफॉर्मेंसेस की है. वैष्णव ने अभी सही टैपिंग की है. यही मैं सनम से चाहता कि वो Yes. वाला टैप इन कर लें जो रुबीना के परफॉर्मेंस में मुझे चाहिए. Yeah, क्योंकि ये फैसल उसकी लकीली personality या suit करती है. या क्योंकि वो जो स्टोरी टेलिंग थी उसके लिए वो गाना, इट वाज फॉर मी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस. आई लव द कॉस्ट्यूमिंग. मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगा. मुझे वैष्णवी का आउटफिट बड़ा पसंद आया. उसके दोस्तों का आना भी मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड डांसिंग वाज वेरी मच ऑन पॉइंट टू मी. इट वाज बॉलीवुड, Excuse इट वाज me, खुला excuse डांस. me. You left our live to go work out? Really? ओके, तो क्या नाम है, फॉर मी इट वाज वेरी मच फर्स्ट क्लास. आई लव्ड इट. वो स्टेप जो उन्होंने फिल्म से लिया है वो भी Yeah. मुझे बहुत अच्छा लगा. जितना अच्छा मैंने वरुण को एंजॉय किया था, ये उतना ही मैंने यहाँ पे एंजॉय किया फैसल को. एंड ही वाज लुकिंग रियली गुड. मुझे लगा कि उसका हेयर स्टाइल भी मुझे इस दफा बहुत अच्छा लगा. पिछली दफा तो जो बैक कॉमिंग थी, देयर वाज समथिंग ऑफ लास्ट टाइम. दिस टाइम Yeah, आई that लव्ड was हिम. very आई off. थिंक this is his best performance by far. And Oh yeah, फैसल भी for sure. या फैसल भी अच्छे कंटेंडर्स में आ सकते हैं. वैष्णवी भी Okay, थैंकफुली उसके ऊपर अब खेल रही है. finally, we are at Zorawar, guys. I don't know. इसकी performance के ऊपर भी क्या ही कहे. It was okay. Yeah. It was fine. It was nothing to like talk about. आज की party or something. That's what he danced on, and he had a blast. He had fun. ये भी teddy bear type है, just like Ali. And he has energy. वो भी ठीक है. I think he was still better than his previous performances. तो ये भी थोड़ा ऊपर जा रहा है in terms of his thing. लेकिन guys, he should not have been here when Ali has been like not are eliminated. मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे रह गया और अली कैसे eliminate हो गया. So that's all I have to say on him. Like, wait, he didn't even cook anything for the judges this week, did he? या मैंने वो skip कर दिया. You're mute. You're mute. You're mute. Even if he did, I was not interested, to be very honest. Yeah, Exactly. I was not interested. मैंने थोड़ा सा डांस फास्ट फॉरवर्ड करके देखा because I was like, setup is grand. I want to see more, but dance नहीं है. Sorry, but his choreographer needs to teach him how to dance, work on steps more than acts and skits and fun. I think she's just like bullshitting right now. And I think अब वो show में है, अली को वो मात दे गया, तो I think next I want to see performance. I don't want to see खाना बनाना या बावर्ची type stuff. I want to see Yeah, अगर dance, not अली acts या को बाहर skits. भेज no, ये अगले हफ्ते नहीं जा oh actually maybe क्योंकि I think Duti Chand probably has a big fan base, so उसको voting आएगी क्योंकि अगर dancing की बात करें then Zorawar is better than her maybe, right? Yeah. Maybe. No, I think Maybe. दूती का No, but एक I like सेकंड, her दूती लटके के ये झटके were fun. Her लटके झटके were fun. दूती को ये एज जरूर है, आई बिलीव, क्योंकि वो एथलीट है. तो वो स्टंट बेस जो मूव्स होते हैं वो कर Yes, सकती है इजीली. yes. Lift, एक्रोबैटिक Yeah. शी lift विल भी बी. करेंगे, lift. या वो एक्रोबैटिक बहुत अच्छी हो सकती है. Yes. जोरावर का मसला ये है, आई लव दिस ड्रेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वांट दैट पिंक थिंग. मुझे ड्रेस बहुत पसंद है, लेकिन आई डोंट नो, वो भी सेम डांस स्टेप से एक जगह खड़े हो गए. आज की Yeah, पार्टी the मेरी तरफ से choreographer is not doing well at all. That's There's why. कीर्ति, no extra या effort. जस्ट रिमूव दिस इमेज.
Like this, like the Why? We setup want is to so see him. grand. वो यही करते हैं एवरी वीक दे आर दिस मतलब वो पीछे से आके यूं यूं Yeah, करेगी फिर वो वो ऊपर नीचे आके ऐसे ऐसे यूं यूं वाला जो कर एक्ट है, yeah. यूं And यूं कर then हाँ यही नथिंग एल्स हिज बॉडी इज नॉट मूविंग प्लीज सुचित्रा किक योर सेल्फ एंड किक हिज बिग बट क्योंकि या तो Yeah, फिर अगर please kick अली की his ass. फिर प्रॉब्लम या क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर अली जैसा कंटेस्टेंट जा सकता है तो फिर आपको अगर ये एज मिल रहा है ये आपको बेनिफिट मिल रहा है अपनी ऑडियंस की तरफ से देन शो देम दैट यू आर वर्थ इट दैट यू डिजर्व इट अगर आपने हर exactly. हफ्ते भी खड़े होके पीटी के 2-3 स्टेप्स करने और स्माइल करनी हो जी मैं तो शेफ हूँ sorry doesn't work for No, me that I doesn't didn't work. like it Yeah, Okay, it guys, doesn't. so that is our review of Jhalak Dikhla Jaa for this week. हम तीनों को, I can say this for them as well. We enjoyed this week better than last week क्योंकि Yeah. last week didn't live up to our expectations. This week हमें लगता है कि at least they brought that emotion and feel factor into it. And जो लोग lag behind कर रहे थे, aka Paras, they did way better. तो ये हमें अच्छा लगा, guys. Please join us next week on Monday again for Jhalak Dikhla Jaa live. And obviously Saturday Sundays आपको पता है हम खतरों के खिलाड़ी के ऊपर बात करेंगे और ये तो फाइनली हो रही है. So we'll see. We don't know about the timing. हमें कुछ पता नहीं कब start होगा, कब finish होगा, वो हम तब की तब देखेंगे. Also, tune in for House of the Dragon review जो कल publish होगा. मेरे time पे कल publish होगा क्योंकि अभी तक मैंने record ही नहीं किया तो publish क्या करूंगी. So that being said, guys, please like करो, subscribe करो and comment करो And and guys, yes, subscribe. हमारा कॉफी विद करण का एपिसोड प्लीज लाइक बढ़ाओ उस पे यार. Go on, watch Yeah, the full आप लोग episode. अनिल और वरुण को क्यों नहीं देख रहे? Please Exactly. like Go and and watch subscribe the और and all full. that stuff. Don't just एक play और it and चीज है leave it. या और जो पिछला झलक का हमारा एपिसोड था ना उसको थोड़ी शर्म कर लो जाके व्यूज दे दो Yeah. मतलब 4.2 शर्म पे वो करो फंसा हुआ वरना है इट डूब मरो. irks me Okay, on that note,